Hello, check. Hello, hello. Testing, testing. Hello, check, check, check. Hello, 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 hello. Check. Hello, check, check. Testing, testing. Hello, test broadcast. Hello. Assalamu alaikum and good afternoon. Welcome to quarterfinal number 2. Hillview Rajouri taking on Royal Goodwill Cricket Club. Hillview won the toss and they invited Goodwill Cricket Club to bat. And talking about the atmosphere here, it's pleasant and we can say that it's 50-50. It is sun as well as cloud cover here at Bakshi Stadium. The two openers in the middle and I got Sheikh Nazir in the com box. अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत आप सभी व्यूवर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, साथ में रेड एफएम जेके यूट्यूब स्वागत करते हैं इस दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। हिलव्यू राजौरी का मुकाबला रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के साथ। जैसे कि मेरे सहयोगी ने स्पष्ट कर दिया, हिलव्यू राजौरी ने टॉस जीतकर पहले आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब को, और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान में, दोनों अंपायर्स रवि कुमार चौरसिया और राजेश्वर भल्ला। आज के इस मुकाबले के ऑन फील्ड अंपायर्स, थर्ड अंपायर शौकत मैडी, स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन जहांगीर जॉन के साथ शुरुआत होने जा रही है मैच की। उवैस अहमद और इश्तियाक रसूल, ये है प्रारंभिक जोड़ी। पहली गेंद लेकर के उवैस के लिए ऑन साइड में खेला। हालांकि शुरुआत इस दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की, दो क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज के दिन खेले जाने, हालांकि दूसरा दिन रात्रि का मुकाबला होगा, वो कुल मिलाकर तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, और कल अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। फिलहाल इस दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हिलव्यू राजौरी की टीम गेंदबाजी कर रही है। इस बार ऑफ साइड में हवा में खूबसूरती के साथ गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए पहला चौका। खाता खुलता हुआ रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब का, और ये खाता खुला यहाँ पर उवैस अहमद का 4 बगैर नुकसान के। जैसा कि मौसम की बात करें, कहीं हल्के बादल और कहीं पे धूप, तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन वातावरण कहना चाहिए क्रिकेट के अनुकूल इस दूसरे निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग क्वार्टर फाइनल नंबर 2 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। 4 बगैर नुकसान के उवैस अहमद और इश्तियाक रसूल, ये दो प्रारंभिक बल्लेबाज। और पवन निर्वाणी से शुरुआत करवाई गेंदबाजी की। फुल टॉस लॉफ्ट कर दिया गेंद को, लॉन्ग ऑन की ओर जा रही है गेंद, सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों का निर्णय आता हुआ अंपायर रवि कुमार का। बड़ा स्ट्रोक था ओवैस के बल्ले से, और जैसे ही देखा कि फुल टॉस मिली है और उसका खूबसूरती के साथ लाभ लिया और सीधे बॉर्डर लाइन से बाहर।
10 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर में और अच्छी शुरुआत देनी होगी। एक ठोस शुरुआत गुडविल की टीम जानी जाती है, वो कड़े प्रहार, विस्फोटक अंदाज होता है पहले ओवर से ही, और उसी प्रकार का प्रदर्शन इस समय देखने को मिल रहा है। ओवेस द्वारा एक छक्का एक चौका लगा चुके हैं। इस बार लेग स्टंप की शेप में ये गेंद थी और ऑन साइड में खेल करके दौड़ पड़े एक सिंगल के लिए। सिंगल मिलता हुआ यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में 11 बगैर नुकसान के, और पहली बार इश्तियाक रसूल सामने पवन निर्वाणी के। 11 with a loss. OS scored all 11 of his 4 balls. First one wasn't up to the pitch of the ball, wasn't up to the mark, getting 4, but the next one, that was aerial. 11 with a loss. Now to face the ball number 1. First ball, and he goes hard at it. Of the inside edge, will pick up one. 12 for none. Toss won by Hillview and Asked. Royal Goodwill to bat first here at the center of Bakshi Stadium. This is the second quarter-final. Pawan Nirvani was being impressive over the past couple of games. In the previous game, he was very well with the ball. Now today, it's the high time to perform as he goes and bows. That's a good delivery. That is a beautiful delivery. Turning into the batter there. Let me take you through the Royal Goodwill 11. They got the captain Ishtiaq Rasool, Aqib Mir, Asif Manzoor, and Gawar Lagi. Jahangir Lone comes in. And then it is Nasir Bashir Kumar, Roof Bashir, Owais Ahmed is there, Webo Mali, Vaitele, and Yash Garg. And talking of the Hillview on the other side, they got the captain Puneet Kumar, Ankush Bandral, Anuj Kumar, Faizan Bhatt, Munib Munaf. These two coming into the side. Pawan Nirvani, Rajat Sharma, Ram Dayal, Rohan Kohl, Suryan Shiraina, and Omar lefty. 2 changes on one side, on the other side, couple of changes again in today's game. Jahangir Lone makes his way back into the side. And today's match, you know that it's the second quarter-final. A winner here will join Athwas India 11 in the semi-finals, as they progressed yesterday by beating the team Global Dodo Titans by 4 runs in the end. That was a remarkable turnaround from nowhere. It's 12 for none as we are going to win over number 2. First over expense, so I can say a good start. A steady one, a compact one. The 2 batters showing that caliber. And talking about their nature, they love to hit the ball hard. But at the moment, they look like that high school in the middle. ये अच्छी शुरुआत देनी होगी, और वो पहले ओवर में ओवेस ने कुछ बड़े स्ट्रोक्स जरूर खेले, हालांकि नाग मात्र 1 पे हैं। और रामदयाल का इस्तेमाल, तेज गेंदबाज का इस्तेमाल दूसरे छोर से खूबसूरती के साथ खेला जरूर, पर शानदार फील्डिंग खिलाड़ी द्वारा रन जरूर बचाए वहाँ पर। मुनीब मुनाफ का चयन आज टीम में, और उसके अलावा फैजान भट्ट। तो और वहीं पे अगर टीम रॉयल गुडविल की बात करें तो जहांगीर लोन की वापसी हुई है, हालांकि आज आदिल वानी टीम का हिस्सा नहीं है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों टीमें लेकर के होते हैं, और इस मुकाबले की बात करें काफ़ी ज़्यादा महत्वता है। मात्र एक टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। अथवास इंडिया 11 ने ग्लोबल डोडो टाइटंस को पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हराया था, सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, और यहाँ से एक और टीम जीत करके दूसरी टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। 1.12 रामदयाल इश्तियाक रसूल के लिए। और इश्तियाक रसूल एक विस्फोटक अंदाज के खिलाड़ी हैं, बड़े स्ट्रोक खेलना जानते हैं। गैप में गई है गेंद और सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ, 4 और खाते में जस्ट बुखारा चौका। 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि, और ये रन संख्या बढ़ती हुई, और कोशिश जरूर होगी यहाँ पर नाग और उनके साथी ओवेस को। और ओवेस का बल्ला भी शांत रहा इस प्रतियोगिता में, कोई खास योगदान नहीं दे पाए हैं, और योगदान देना होगा, ज़रूरी भी है, क्योंकि एक बेहतर बल्लेबाजी की आवश्यकता, एक बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन। और कहना चाहिए यहाँ रॉयल गुडविल की टीम 1.2 ओवर की गेंदबाजी। इश्तियाक रसूल 5 पे। एक अच्छी और बेहतर शुरुआत की आवश्यकता यहाँ हिलव्यू राजौरी की टीम चाहेगी कि कम से कम लक्ष्य तक रोका जाए गुडविल की टीम को। खूबसूरती के साथ पुल किया, बहुत ही बेहतरीन प्रिय स्ट्रोक नाग का, और 6 मिल जाएंगे यहाँ पर। एक बार फिर एक और छक्का रसूल के बल्ले से निकलता हुआ। इश्तियाक रसूल इस छक्के के साथ पहुंच गए 11 पे उनकी व्यक्तिगत रन संख्या। और रामदयाल गति का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर उस गति का इस्तेमाल बेहतर तरीके से नाग ने भी किया, ये देख लीजिए। बहुत ही बेहतर अनुमान, संतुलन और वो क्षमता इस बल्लेबाज की। सेंट्रल पवेलियन एंड पे जाकर के गेंद लगी है 22 बगैर नुकसान के। दयाल के पास अनुभव है, पर उस अनुभव का बेहतर इस्तेमाल करना इस विकेट पे एक चुनौती जरूर है। यहाँ डॉट गेंद पर जिस प्रकार की बल्लेबाजी आप देखिए, इश्तियाक रसूल, उसके अलावा
ओवेस, जहांगीर लोन के मीर और कुछ अन्य दीगर खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो आपके पास गर्ग अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और कुछ अन्य दीगर खिलाड़ी वाहिद तेली, तो नंबर 9-10 तक उनके पास बल्लेबाजी है। तो कोशिश जरूर होगी एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने की, क्योंकि अब तक गुडविल ने शानदार प्रदर्शन किया है इस प्रतियोगिता में। एक बार फिर उठा दिया हवाई यात्रा पे, गेंद वहां पर सीधे बाउंड्री लाइन के आसपास संभवतः फील्ड तो कर लिया गया, पर देखना होगा कुछ रन जरूर बटोरे अथवा नहीं, ये देखने वाली बात हो गई। 22 इससे पूर्व जरूर कुछ रन मिले, 3 रन दौड़ करके पूरे कर लिए। 1.4 के बाद 25 रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब, हालांकि वो आमंत्रित तौर पर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं हिलव्यू राजौरी के विरुद्ध इस दूसरे निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। 1.4-25 गुडविल, ओवेस 11, इश्तियाक रसूल 14। Good start for Royal Goodwill. After being put into bat, they added on 25. And OS is marking the fresh guard. Is going to face the likes of Ram Dayal, who conceded 13 of his 4 balls in his very first over. Nirvani little off color. Now Ram Dayal from other end, from Northern Pavilion end, he has already conceded 13 of his 4 balls. So you can understand that how runs are coming. It is simply runs keep coming. They're flowing at the moment, and that is a good shot. There is protection. This field will just be one cut away nicely. In control. Thoughtful. And he's going to pick one. With that, it's 26 for none. This is just the second over underway. And talking about the weather here at Bakshi Stadium, it's hide and seek going on. Sun and cloud is playing hide and seek. It's cloudy, it's sunshine in between. That's why I threw it out earlier on that it's 50-50. But a good and a pleasant atmosphere right now. Gentle breeze, colorful flags waving around the center. Nice scenes here at the center earlier on. This is just the second over. We are done with, and Nirvani has got the ball again. What Nirvani is going to do now, he's going to bowl from Southern Pavilion, and first over, that cost him 12. OAS, the man who picked up 12 off his over, and he dispatched the first ball, wasn't up to the mark. That gone aerial over covers the next one, that flown over long on, and landed onto the boundary triangle there. Score ticker is still displaying 1.4. We are in over number 3. It's taking little time to update. As we watch, Nirvani is warming up a bit. Something needs to be done earlier on. And the 2 men in the middle, they will ensure that Royal Goodwill have good score on the board. And that's a cracking shot. Little back away. And punch to that one. Wasn't easy for Ramdayal to cut it off. There was energy and power behind the shot. It races away. It goes past in no time. The pair in the middle. And you know that they have a lot of pace and energy. They love to hit the ball hard. उसमें कोई क्षमता नहीं है और कोई दो राय नहीं है। जो क्षमता इन दो बल्लेबाजों के बीच है, वो क्षमता का बेहतर प्रयोग कर रहे हैं। एक दूसरे का दायित्व, एक दूसरे का अनुभव और कहीं ना कहीं वो स्थापना इस मैच में पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए इरादे उन्होंने स्पष्ट किए हैं और वो स्पष्ट इरादों के साथ मैदान में उतरी है रॉयल गुडविल की टीम। ये उनकी क्षमता है। एक और बेहतर स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और चौका, 4 और खाते में ओवेस के बल्ले से रन संख्या पहुंच गई है 34 पे। तो ओवेस अहमद हालांकि पिछले कुछ मुकाबलों से वो उनका बल्ला उतना ज़्यादा बोला नहीं है, खामोश रहा है, उतना बेहतर प्रदर्शन उनका रहा नहीं, पर इस बड़े मुकाबले में फॉर्म में लौटना बहुत बड़ी बात उनकी टीम के लिए, खासकर रॉयल गुडविल की यदि बात करें। और हिलव्यू राजौरी चाहेगी कि यहाँ से एक विकेट तलाशें, क्योंकि विकेट ही मात्र एक ऐसा ऑप्शन होगा आपके पास, आप रन संख्या में थोड़ा अंकुश लगा सकते हैं। इस बार गति में परिवर्तन, चकमा दिया, भाग लिया गेंद ने बल्ले का और सीधे विकेट कीपर के पास। इस प्रकार से यहाँ पारी समाप्त होती हुई ओवेस की। विकेट कीपर ने शानदार कैच लपका, पहला विकेट गया, 34 पे पहला विकेट गवाया रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने। मुनव्वर, First blood is drawn. Huge and massive wicket. One big fish caught in the net in the form of Owas Ahmed. Racing away with the scoreboard for a while. He's gone on 20 of 9 balls. There was inside edge beneath the bat and going into the hands of wicketkeeper who makes no mistake.
And in no time, he tossed the ball up in celebration, in joy, asking Ravi Kumar Chaurasia, how is that? He says he's out, caught behind, much needed breakthrough. Nirvani is finally among the wickets. There was brutal hitting going on. It was massive hitting. And Nirvani has conceded 20 of his 1.3. So 9 balls, literally, and gone for 20 runs. Expensive, but effective. Expensive come effective, we can say, as he has picked up an important wicket, that too of Uwais Ahmed. Nasir Bashir Kumar is in at number 3. He's in good form over the past couple of days. Will he carry that form in today's game? That's important. What will he do in today's game? As this is the quarterfinal number 2. Semi-final spot and is at stake. That semi-final spot is at stake. Let's see what he will do with the bat in today's game. As Nirvani is an easy customer. We saw that he's gone for 12 of his first. And that was Uwais at its very own best. Even in this over, he conceded 2 boundaries earlier on. And the third one, it was the last laugh. He's got the man in slip cordon. For Nasir Kumar, first ball. And it flies. Where is this one going? One bounce into the long on boundary for 4. Straight away, making his intentions clear. He's going to go after. No matter. Whatever comes the bowling side way. And even what will happen to his side. He's going to throw his bat at everything. Look at that. Aerial, upish. One bounce into the fence. It's again cloudy. Bit overcast at the moment. As Nirvani continues to operate. Nirvani will have to do something special to keep Nasir Kumar under check. This time crouch low. That's another beauty of the lad. He knows how to get low on his knees. He knows how to bend his knees. Crouch low again, keeps it away. 38 for 1. 38 पे 1.5 ओवेस का विकेट मिल चुका है हिलव्यू राजौरी को. पवन निर्वाणी को वो सफलता मिली. कुमार आए हैं वापस बॉलर की दिशा में. थोड़ा धीमी गति की गेंद थी और यहाँ पे बल्लेबाजों पे शिकंजा कसना जरूरी है. हिलव्यू राजौरी को 3 के बाद 38 पे 1, 12.67 का रन रेट. नासिर बशीर कुमार 4, इश्तियाक रसूल 14. दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस. और अथवास इंडिया 11 की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है. और दूसरी टीम यहां से निर्णय आएगा इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले से. क्या हिलव्यू राजौरी की टीम जीत पाएगी या फिर रॉयल गुडविल की टीम होगी जो दूसरी टीम बनेगी जो सेमीफाइनल में जाने का श्रेय प्राप्त करेगी. फिलहाल पहली पारी 3 ओवर की गेंदबाजी में 38, 1 विकेट पे नासिर बशीर 4, इश्तियाक रसूल 14 और उवैस अहमद आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं. वो पहले विकेट के रूप में मैदान से बाहर गए थे क्योंकि यार रॉयल गुडविल को एक बेहतर शुरुआत चाहिए, एक चुनौती उनको देनी है हिलव्यू राजौरी को. तो इश्तियाक रसूल को बेहतर प्रदर्शन जरूरी है क्योंकि विकेट की अगर बात करें तो अच्छा विकेट है बल्लेबाजी के लिए. पिछले कुछ मुकाबलों से हमने देखा बेहतर विकेट और कुछ गेंदें जरूर नीचे रह रही हैं पर थोड़ा आत्मविश्वास जरूरी है. एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करना जरूरी. यहाँ इश्तियाक रसूल और उनके साथ नासिर बशीर को 38 पे 1, 3 के बाद चौथे की शुरुआत. पहला परिवर्तन रजत शर्मा का इस्तेमाल, अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद नीचे रही, पैड से टकराई, बड़ा स्ट्रोक ऑन साइड में मारना चाहते थे इश्तियाक रसूल. ऐसे में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं. 38 पे 1, चौथा ओवर. रजत शर्मा का चयन किया गया है गेंदबाजी में. हालांकि ये पहला परिवर्तन है इस गेंदबाजी के मोर्चे की अगर हम बात करें. अंदरूनी भाग गेंद पीछे चली गई है यार, देखना होगा. फील्डिंग वहां पर जरूर फील्डर ने प्रयास किया पर गेंद उनकी गति काफी तेज थी. फील्डर से चौका मिलता हुआ 4 और खाते में 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि. यह अंदरूनी भाग जरूर लगा था. हर इस प्रकार से 4 और जी हाँ बिल्कुल, और ताकत जरूरी है. इश्तियाक रसूल और हर स्ट्रोक के पीछे वो बड़े प्रहार जरूर करते हैं और वो उनकी क्षमता भी है, वो उनकी कला भी है. और जो इरादे उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पावर प्ले में आपको एक ठोस और विश्वसनीय आधारशिला प्रदान करनी है. इस बार सम्मानजनक रूप से हल्के हाथों के साथ गेंद की पिच तक पहुंचे. पहली बार देखने को मिला इश्तियाक रसूल द्वारा. ऑन साइड में खेल करके सिंगल पूरा कर लिया. 1 रन और खाते में. नाग पहुंच गए 19 पे. नासिर कुमार अब 4 पे सामने. 43 पे 1, चौथा ओवर. ये पावर प्ले समय ऑन. देखना होगा कहां तक पहुंच पाएगी ये टीम और क्या लक्ष्य रहेगा. 5 रन अभी तक खर्चे 3 गेंदों से रजत शर्मा ने.
रजत शर्मा, पवन निर्वाणी और उसके अलावा एक और गेंदबाज का चयन किया गया था, रामदयाल। 3 गेंदबाज अभी तक प्रयोग में लाए गए हैं। कुमार के लिए ऑन साइड में एक सिंगल के लिए, और सिंगल जरूर मिल जाएगा। अच्छी रणनीति, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, बड़े स्ट्रोक भी आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बेहतरीन क्रिकेट इस समय रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब द्वारा हिलव्यू राजौरी के बाद इस दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बख्शी स्टेडियम श्रीनगर। आगे धूप और छांव का खेल लगातार, हल्के बादल आकाश में। ये नाका, एक और बढ़िया स्ट्रोक और गेंद सीधे स्टेडियम्स में, स्टेडियम से बाहर जा लगी है। निश्चित तौर पे काफी दूर गई है गेंद, और 6 रन अर्जित किए। एक और छक्का नाग के बल्ले से, और कितना पावर था इस स्ट्रोक के पीछे, बड़े खूबसूरत अंदाज से। ये देख लीजिए, बहुत ही बेहतर तरीके से मिडिल ऑफ द बैट से 6 और स्ट्रोक लगाने के साथ ही वो संतुष्ट थे कि बाउंड्री से बाहर ही गेंद जाएगी। 6 रन और खाते में, और इस छक्के के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई रॉयल गुडविल 50 एक विकेट पे 3.5 ओवर की गेंदबाजी में 13.04 का इस समय करंट रन रेट। नाग 25 पे 10 गेंदों से, नाग का विकेट जरूरी हिलव्यू राजौरी के लिए, अन्यथा एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर। हालांकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, पर वो शुरुआत में तेज तरार जो 50-60 रन नाग जोड़ लेंगे नासिर कुमार के साथ, तो वो एक एज मिलता है, एक प्लस पॉइंट मिलता है, ताकि आप 190-200 के आसपास आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। पर यहाँ अगर आप थोड़ा रनगति पे अंकुश लगा पाए, नाग का विकेट प्राप्त कर पाए, बेहतर गेंदबाजी हो पाए, तो फिर आप उस बड़े विशाल लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकते हैं रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब को। रजत शर्मा 12 रन खर्चे अपनी पहली 5 गेंदों से, ये उनका पहला ओवर। आखिरी गेंद लेकर के ओवर की इश्तियाक रसूल के लिए 50 एक विकेट पे। यह एक सिंगल लेना चाहते थे, पर जैसे ही देखा गेंद फील्डर के पास, वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज में। ओवर की समाप्ति 4 समाप्त, रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब 50 पे 1। Projective start. It took just 4 overs to get there. 50 on the board with just 1 down. O.S. Ahmed, the only man who's gone early this afternoon, scoring quick fire 20 from 9 balls. Rajat Sharma in his very first over, he's gone for 12. And likewise, we saw 12 coming up Nirvani's first over. And that 6, that was a massive 6. Nog, when he hits, it stays a hit. And that gone out of the stadium. Let's see how many balls will fly and go outside the stadium premises. The one has already gone that way. 50 on the board after 4 overs. Nasir Kumar, we already saw that. He crouched low, going with that on drive, pushed the other one away. The next one we saw that sweep shot coming into play. What kind of shots he will produce and generate against the likes of Rajat Shah. Pavan Nirvani was in his 3rd over. Nirvani with that extra bounce and little turn. And Nasir does well. Early he was trying to swing it away. Then he decided to wait for the ball and let it turn away. An extra bounce, then a tap on it. Not for runs. 50 on the board. Static. They're going 12 and over. Nirvani, he has picked up a wicket. Beautifully bowled. Nice one. The one that we have seen on this surface plenty of times. Adil Rishi, he isn't feeling well today. That's why he's unable to make his way into the playing 11. Otherwise, team won't go without Rishi like a batter, that of that caliber and class with a huge experience under his belt. That's an aerial shot. There is a man. Somehow he managed to, oh no, it goes through. For a while I thought he managed to stop the ball. But it's the pace of Nasir Kumar. You know that the bat speed and the swing of the blade, that is ferocious. Massive again, and fielder there, he was just trying to stop the ball, and there was a chance of a catch too, but it landed safely a few yards before the field can come in, and after that he couldn't stop the ball. And Nasir collecting a boundary, 54 for 1. Next one, Nasir. What I was talking about, that we have seen a couple of shots straight away. Yes, he has got that wide range of shots. He has plenty of shots from cricketing book. We have seen quite a few straight away. He has brought it on with the bat. The next one, this time he goes deep, and that's aerial, and it's beyond the boundary line for a maximum. 6 more again. It's 60 for 1. लगातार प्रहार इसमें नासिर कुमार और इश्तियाक रसूल दौरे, और जिस प्रकार से वो लगातार यहाँ आक्रमण कर रहे हैं और आक्रामक शैली से बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं ये उस समय है और यहाँ से आप रनगति को और उछाल दे सकते हैं। बेहतर बल्लेबाजी, स्टैंड्स में जा लगी थी वो गेंद। 6 मिले थे नासिर कुमार को। शुरुआती ओवर्स में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी,
विस्फोटक अंदाज नासिर बशीर कुमार 15 9 गेंदों से इश्तियाक रसूल 25 कुल रन संख्या 60 एक विकेट पे और मात्र एक सफलता हुआ इसके रूप में। पवन निर्वाणी को मिली थी 2.5 ओवर 34 एक विकेट उनकी गेंदबाजी विश्लेषण और ऐसे में 248 प्रोजेक्ट स्कोर पर यहाँ पे सोच विचार जरूर, छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल करना जरूरी, आवश्यकता भी है विकेट की इस साझेदारी को तोड़ने की, क्योंकि दोनों विस्फोटक बल्लेबाज और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता चला जाएगा ये पारी आगे बढ़ती चली जाएगी, ये और भी मजबूती के साथ और भी सेट होकर के आक्रमण करने का सफलतापूर्वक प्रयास कर पाएंगे। नासिर 15 पे सामने 60 पे 1 4.5 अंतिम गेंद का ना बाकी 12.41 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए यहाँ रॉयल गुडविल ने। निर्वाणी के बाद एक और बड़ा स्ट्रोक, एक और खूबसूरत स्ट्रोक और गेंद 1-2 टिपों के बाद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए एक और चौका। अंतिम गेंद पर चौका, इस ओवर में 2 चौके 1 छक्का पवन निर्वाणी के विरुद्ध। नासिर कुमार विस्फोटक अंदाज आक्रामक शैली से बल्लेबाजी खूबसूरती के साथ इससे गेंद को निकाला था 4 रनों के लिए और वो चौका जरूर मिला था। अंतिम गेंद पर ओवर की समाप्ति 5 समाप्त। रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब इस दूसरे निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 64 एक विकेट पे 5 के बाद अभी भी एक ओवर का आना बाकी। पावर प्ले की यदि बात करें उस पहले पावर प्ले में 64 रन गुडविल ने बना लिए हैं। नासिर बशीर ने 19, इश्तियाक रसूल ने 25 बनाए हैं। ओवेस आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। यह आखिरी ओवर होगा पहले बैटिंग पावर प्ले का। रजत शर्मा एक ओवर 12 रन, दूसरे ओवर में वो समाप्ति गेंदबाजी करेंगे। यह छठा ओवर होगा ये पहली पारी का। 5 में 64 विस्फोटक अंदाज आक्रमण किया है खूबसूरती के साथ और प्रहार किए गेंदबाजी पे। एक और बेहतर स्ट्रोक और एक बार फिर गेंद सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों का निर्णय आता अंपायर का। इस छक्के के साथ रन संख्या 70 यहां रनों के बरसात ऐतिहासिक बख्शी स्टेडियम में जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग के दूसरे निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जो कि खेला जा रहा है हिलव्यू राजौरी और रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के बीच। इश्तियाक रसूल ओवेस ने शुरुआत की, ओवेस अपना विकेट गंवा बैठे पर नासिर कुमार और इश्तियाक रसूल ने आक्रमण किया है यहाँ पर पूरी तरह से और लगातार यहाँ प्रहार किए जा रहे हैं। लीजिए एक और चौका, एक बार फिर गेंद सीमा रेखा से बाहर। निराश वहां पर फील्डर सोच रहे होंगे सोच विचार के क्या किया जाए इस गेंदबाज द्वारा इस बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि शिकंजा कसना है तो फिर कुछ अलग प्रकार का उपाय जरूरी है। पर इश्तियाक रसूल लगातार प्रहार कर रहे हैं और आज़ादी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं है। 74 पे 1 5.2 के बाद एक बार फिर खूबसूरती के साथ खेला जरूर था पर सीधे वहां पर फील्डर तैनात थे पर उन्होंने प्रयास किया, वो असफल रहा। गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक और छक्का। अरे यार कहानी लगातार वही चौके और छक्कों के बरसात इस मुकाबले में रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब द्वारा लगातार बेहतर बल्लेबाजी होती हुई और हर गेंद पर प्रहार किया जा रहे हैं। खुलकर स्ट्रोक की प्रयास जरूर किया था पर नहीं पहुंच पाए और गेंद बॉर्डर लाइन से बाहर चले गई 6 के लिए। 80 पे 1 5.3 के बाद अगली गेंद एक बार फिर उड़ाया, फिर यहाँ गेंद को परवाज देते हुए स्टैंड्स में जा पहुंचा। एक और छक्का, 3 छक्के 1 चौका। इस ओवर में 22 आ चुके हैं पवन निर्वाणी के विरुद्ध और क्या बेहतर बल्लेबाजी ये देख लीजिए। और कमाल का स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक नाग के बल्ले से और गेंद काफी ऊपर स्टैंड्स में। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी नाग द्वारा। अब तक लगातार विस्फोटक अंदाज इस खिलाड़ी द्वारा। रन संख्या 86, इश्तियाक रसूल 15 गेंदों से 47 पे तेज तरार विस्फोटक पारी इश्तियाक रसूल द्वारा। और यहाँ खूबसूरती के साथ कवर्स में और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। तेज तरीन यहाँ अर्धशतक इश्तियाक रसूल के नाम। मात्र 16 गेंदों से ये 50 पूरे किए। 51 पे नाबाद है इश्तियाक रसूल 16 गेंदों से रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के लिए। ये बेहतरीन स्ट्रोक था खूबसूरती के साथ। 2 खिलाड़ियों के बीच में शानदार प्लेस में चौका बटोरा 4 और खाते में और गुडविल की टीम इस समय मात्र 6 ओवर में करीब करीब 90 तक पहुंच चुके हैं। 5.5 90 पे 1 15.43 का इस समय करंट रन रेट। इस ओवर में 6-4 आखिरी गेंद का आना बाकी। 3 छक्के 2 चौके आ चुके हैं पर आखिरी गेंद पर सम्मान दिया सम्मानजनक रूप से, रक्षात्मक रूप से। ओवर से 10 16 22 26 रन समाप्ति। 3 छक्के और 2 चौके 51-17 गेंदों से 300 के स्ट्राइक रेट से 5 छक्के 4 चौके 17 से 51 इश्तियाक रसूल। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 90 1 विकेट पे रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब। What an innings.
incredible and brute force. Ishtiaq Rasool, the quickest 50 of the tournament. Earlier best it was 19 ball 50 to Sahil Shafi of United Imports. Now it's Ishtiaq Rasool who breaks free, breaking shackles, and created another record. It's a milestone achieved by a rare feat in the tournament. And it belongs to Nagna, the quickest 50 of the tournament of just 16 balls. The earlier best that was of 19 balls from Sahil Shafi, and now it's the quickest of the tournament of just 16. Well, take a look again. These are the shots. Nazir, we're talking about it's a 51 from 17. It's a 17 ball, a half century we can say, and earlier was 19 ball. Can he convert? The other thing is that Sahil Shafi converted that half century into a century, and he's the lone man who scored 100 in the tournament, the lone centurion. And is he going to meet that today? He has an opportunity. The first one is already done. Half the job is done, half needs to be done. Well accomplished, 51 of 17 balls. It's 90 for 1 after 6 overs. We are going to be in 7th over. We are done with the power play. Restrictions are all over. The 5 men are going to be outside the 30-yard circle. 5 men patrolling. The boundary riders, there is going to be long on, long off. Umar left has got the ball. There is a mid-wicket in place. There is a man at backward of scare, and someone is around the extra cover area. With this field, with this setup, what will Umar Lefty do? He's a local lad. He's a local boy from Musti. Little change in the field. Infield is asked to stay a bit close. And here is the fresher first ball. Guided nicely. There is a fumble. He has made mess of that. Laziness and imprudence. What could have been a single and a conceded boundary. It's the captain of the pack. When captain do this, a silly mistake there to me. And look, he lost the control of the ball. Unable to back his bowler. And Nasir gets 4 for that. In control, gentle one. As he dabbed it. Gets 4 for that. Moves to 23. That one again. Playing a bit late. Once again it's through. What are you doing, captain, there? The second boundary of the over. Umar Lefty is looking clueless and helpless at the moment. As captain is unable to bend his body there. He is unable to bend his back twice in an over. 2 boundaries coming in this over. And both in the same direction of third man area. Where Nasir Kumar is so strong. He knows how to play late. And late dab comes into play. The next one is through straight towards long off. And he will chip in with a single here. It's 9 already of 3 balls here. Well, that is the good thing. That's the better part. The best thing about Nasir Kumar is not going hard at everything. He's just trying to play the ball and merit, maintaining the discipline, batting decently at the moment. He has his own aura and he knows how to bat and score runs. Next one, one-handed. And Nasir wanted second, but Ishtiaq isn't interested. Second was pretty on, but he decided to settle for 1 and giving some time to Nasir, who's in control and is controlling things here in good, and we can say he's in commanding position the way he's controlling and containing the bowlers. We saw 2 boundaries coming, and it's because of that fielder who was a bit lazy in a kind of a deep slumber there. Nasir is going to improve with the passage of time. If Nasir gets going, he's going to be more dangerous, effective and impactful than Nag, because Nasir is going to play all the cricketing shots and Nag believes in power. He goes hard at everything. He throws his kitchen sink, and we have seen ball flowing and ball flying, ball flown. In the meantime, the next one, that's in the gap. Chase for the man. Does well this time round. It's a flat return, just a single to end the over number 7. Another big over. And they are past 100 now.
They're above 100. Royal Goodwill against the likes of Hillview Rajouri. Winning the toss, electing to bowl, opt to bowl, and given Royal Goodwill an opportunity to set the tone high. Well, it's beyond 100 after 7 overs. And Hillview, their body language is bit down at the moment. Straight away, there was no intent to fight it out here. That too in the quarterfinals, a team making it to the quarters is an achievement. But the brand of cricket you need to play at quarterfinal stage, it should be different. And it should look like a side that has everything clear, that has everything in the store. And looking at their experience, then they are the big names of cricket in Jammu province and from other part of Kashmir, we can say, or the J&K side. Well, 5 of them have plenty, loads, tremendous experience under their belt. But we haven't seen that experience here. That's lacking and that's missing somewhere. And on the receiving end, it was brutal hitting within the power play. Fresh first ball. Nag again throws it. He knows that power is my strength. He believes in that. That's his strength. Hitting the ball, he's got that carry and the ball goes the distance. He has that energy, power, ability. He's unable to hit the ball away from the park. He can make the ball fly and swing up the bat is something that surprised everyone. That one, he throws his bat at it. It flies over the slip cord and runs. And runs are coming thick and fast. It's raining boundaries at the moment here at beautiful stadium of Bakshi Stadium. It's the beautiful venue where it's unfolding. It's going on. Look, he was trying to go for that cover drive. Would have been an excellent shot, but the ball flies of the outer splice to third man. Runs keep coming, flowing thick and fast, bread and butter. It's been predictive phase as they're running away with the scorecard. Carnage continues. And bowlers are unable to understand. Look at that one. That is an excellent shot onto the front foot. What a timing. He's got the hawk eye. Vigilant. What a vigil he's carrying. Onto the front foot. It picks it up. Pacer and Nasir Kumar advances. He skips down the track. Drilled it straight to long off area. There is a possibility of a single. Good attendance again. Spectators coming in good numbers. And knowing that Nog is playing, they know very well that it's the home team. We can say Royal Goodwill. Oh, look at that shot. That's beyond the cover boundary for again. How come you stop the bat flow? It's the ferocity. It's the typhoon and storm in the middle. How to stop it? They don't know. The power, tremendous power, ferocity, ferocious. It's a boys' series challenge right now, posed by the 2 men in the middle. And Hillview Rajouri. There is nothing like that of hill. It looks like that flat and flattened bowling attack. The 2 men dismantling. And bowlers are under the pump, ruthless hitting, flawless, reckless. And bowlers showing that helplessness. They're left with no other option. They are just receiving the treatment. Look at that one. There is a man at long on. Should be taken. It is. And Nag is the second one to depart. Huge wicket. Massive one. Important one. Importance. And Ramdale makes sure that initiative is seized at long on. Endangerment departs. It's Nag to go. He's walking back to pavilion. But he has done the destruction. The job is done. This is called absolute carnage. Demolished. The other side. Disturbed. And look, there comes White Tele or Akib Mir. We'll have to wait and watch in a kind of a hurdle. But look, the faces are telling that it was unbelievable hitting. And they were treated. What a treatment. They didn't deserve that kind of a treatment. But it was Nag in his full flow. Akib Mir walks in at number 4. Anuj Kumar gone for 12 of his 5 balls. We saw a single, 4, then a single. Makes it 6 and a 6. Makes it 12 of 5 balls.
Akib is in at number 4. Akib and Jahangir Lone just begin their second innings of the life, and they are finally back on the field after a couple of days. And talking about Nasir Kumar, he's batting on 34 of 16. That's the problem with Nag. Once he get to his 50, then all of a sudden he used to get overcautious. Once again doing that in the same fashion. Who's going to bring them back into the game? Look, it's 100 already on the board. We are into the 8th over with plenty of batting to come. Asif Manzoor, Jahangir Lone, Wahid Tele. These are the big names who are yet to bat. These two in the middle now just need to reconcile and look forward for a partnership. Put a stand of 30-40 together. Put on that show. And I believe that you can ensure the rest of the pack that we can finish around 200 and beyond that. And that is going to be a tough task. And it won't be easy. It's going to be an uphill task for Hillview while batting second here at Bakshi Stadium. We're done with 8. 2 for 114. Nag and OS, both openers back to hut. Number 3 and number 4. With responsibility on their shoulders, they're in the middle. अनुज कुमार को सफलता मिली नाग की आक्रामक शैली से अर्धशतक पूरा किया, पर उस अर्धशतक को शतक में कन्वर्ट नहीं कर पाए, परिवर्तित नहीं कर पाए। अपना विकेट गवा बैठे आकिब मीर आए हैं अब नंबर 4 पे। 8 के बाद 114 पे। और कुछ समय पहले आपने जिक्र किया था कि हिल वेव का उस प्रकार का कोई प्रदर्शन रहा नहीं है, पर सामने जो लक्ष्य एक विशाल जनक और पहाड़ जैसा लक्ष्य, फिर हिल वेव रजौरी को उस पहाड़ पे चढ़ना जरूरी है, हिल पे चढ़ना जरूरी है अगर यहाँ आप रन गति पे अंकुश ना लगाएं। 12 ओवर का आना बाकी। नासिर, बशीर और आकिब, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा इन दो बल्लेबाजों पर, क्योंकि शुरुआत वो विस्फोटक, वो तेज दरार, वो आकर्षक शुरुआत 17 गेंदों से 50 नाग के बल्ले से आए। नासिर कुमार 34 पे मात्र 16 गेंदों से 14.25 का रन रेट। तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या विस्फोटक अंदाज। हालांकि टॉस जीते थे आज हिलव्यू राजौरी की टीम, पर उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए नाग और ओवैस ने शुरुआत की। ओवैस ज्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाए पहले विकेट के रूप में, फिर नाग दूसरे विकेट के रूप में, और अब नासिर बशीर सामने 34 पे। उमर लेफ्टी अपना पहला ओवर 12 रन। ये 12 का लक्ष्य आज काफी रास आया गेंदबाजों को। उमर ने 12 रन दिए, निर्वाणी की ओर से 12 आए थे, उसके अलावा एक अन्य गेंदबाज की ओर से भी 12 रन आए थे। अच्छा स्ट्रोक था, बेहतरीन स्ट्रोक था, पर सिंगल मिलेगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच गई है 115। 2 विकेट पे 9वां ओवर पारी का दूसरा निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास विद कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस आज दिखा बल्लेबाजी में इश्तियाक रसूल द्वारा, जिस प्रकार से उन्होंने तेज दरार वो शानदार हिटिंग की इस मैच में। और यहाँ कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास, गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ। जैसे ही देखा थोड़ी ऑप्शन से बाहर है, और फील्डर के सर के ऊपर से उठा करके खेला। 4 रन अर्जित किए उमर लेफ्टी के विरुद्ध, और ये बेहतर स्ट्रोक था। और 4 और खाते में जुड़े 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि। ये रन संख्या अब जाकर के पहुंच चुकी है करीब करीब 119 तक। 9वें ओवर में 2 विकेट पे रॉयल गुडविल 120 पे 2, 8.2 के बाद। इस बार हल्के हाथों के साथ थोड़ा नीचे रही थी गेंद पड़ने के बाद। ऑन साइड में खेले, एक सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़ी आसानी के साथ, बड़ी सहजता के साथ बल्लेबाजी होती हुई। अच्छा क्रिकेट इसमें नासिर कुमार और इश्तियाक रसूल का। 121, 121, 2 विकेट पे। अंतिम गेंद का आना बाकी 39। नासिर बशीर, आकिब मीर 2। वाहिद तेली अभी टीम का हिस्सा है, जहांगीर लोन आज टीम का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं आपके पास बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं, और कोशिश बड़े लक्ष्य तक पहुंचने की। ये अच्छी गेंद थी, पर एक सिंगल चुरा लिया। वहाँ पर फील्डिंग उस प्रकार की आज रही नहीं है हिलव्यू राजौरी की, काफ़ी ज़्यादा लैप्स हुआ है फील्डिंग में। ओवर लेफ्टी 1.4 में 19, और इस ओवर में 7 रन उन्होंने खर्चे हैं 4 गेंदों से। कुमार सामने 39 पे। रॉयल गुडविल 122 पे 2, 1, 2, 2, 2, 8.4 यह है आंकड़ा इस समय। 2 गेंदों का आना बाकी उमर लेफ्टी नासिर कुमार के लिए। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, ऑफ स्टंप पर थी गेंद की लाइन में नहीं आ पाया, और हर प्रहार, हालांकि नासिर कुमार एक दिग्गज अनुभवी खिलाड़ी हैं, और इस प्रकार के स्ट्रोक से बचना जरूर। अपनी जगह खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद की लाइन से दूर रह करके आसान रहता नहीं है, पर
उनके इरादे कुछ अलग प्रकार के। 39 पे नाबाद है 19 गेंदों से, 122, 2 विकेट पे अंतिम गेंद का नाबाद नॉर्दर्न पवेलियन से उमर लेफ्टी। अच्छी गेंद इस बार चतुराई के साथ फेंकी हुई है गेंद, थोड़ा सा उछाल जरूर था, पैड पे टकराई, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। ओवर की समाप्ति, 9 समाप्ति, 122 पे 2, रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब। Some respite, a kind of breather for the bowlers in the middle. Solitary boundary coming up over number 9 from Umar lefty. 2 was none for 19. In search of a breakthrough, in search of a wicket here. Nasir Bashir, 39 of just 20 balls. Aqib has that technique. He can make Nasir bat around him. He will provide them space and medium where he can breathe free and score at will. That's the beauty of Aqib Mir. He has that role and he has to play his part in today's game. The game is of great importance. Anuj Kumar will continue. He removed Nag, and Nag scoring 12 off his over. He scored 12 invaluable runs, then handed easy cash to Ramdale at long on. Anuj to continue. Hillview need a kind of miracle to prevail. Something is going on. Umar lefty having a word with strike umpire over there. I think things are okay, fine, settled now. Anuj is ready to begin the fresh over from Northern Pavilion end. We have two ends here, Southern and the Northern Pavilion. Good shot on that occasion, straight away off his hips, worked away nicely. And Aqib moves to 4. Nasir Bashir Kumar, invaluable 39. He was going after the bowlers within the power play. It was non-stop action. It was cinematic in the middle. 422. Oh, dig out nicely. Anuj is now doing well from his side. At least one man is showing some energy, positive energy. He's looked good and positive at the moment. Nasir Kumar could only do, keeps it to mid-on. After digging that one out, there is a fly slip in place. Rohan Cole is in that portion. That is the trademark. Aqib Mir. And that's gone all the way for a maximum. What a shot. Lovely. Timing, placement. Trademark, hallmark. Aqib Mir at his very own best. Anuj Kumar. Oh, look at that shot again. Elegance is there. Inside out he goes. And talking about that, audacious and honesty. Wow, what a shot. Lovely timing. And Anuj Kumar all of a sudden surprised by Aqib Mir. The next one is aerial and flicked in the gap. Will it run down? Oh, there is a fumble again. What's going on? Nirvani. What are you doing? This time it's gone through the legs. He has put on sunglasses. For what purpose? When you can't stop the ball like this. What's the role of that? And I am surprised here. You can see that. Take a look again. Oh, wow. What's going on? He has made mess of that. How come you sport your bowler when you leak runs like this? Leakage continues. They're bleeding at the moment. Next one is again in the same direction. Will he get to the ball? Oh, can't cut it off. Second boundary. Flicked away nicely. And that is the technique, the solid technique he possesses. And that's why he's known as Mr. Consistent, the rock, the wall in the valley. Look again. Bat and pad close together. Worked away nicely, gently. Had still eyes on the ball. Quality. On the other side, Anuj Kumar, he can do no more. When fielders leak boundaries like this, what can bowler do? And he was surprised with that. Short of extra cover. And that was something he never expected. He won't have thought that this will happen to me, like this a batter will come forward and make a little bit room, then go over covers with a wonderful shot. It's halfway mark, 10 done, 439. Nasir Bashir 40 of 21, Aqib Mir 19 of 8 balls. And Anuj Kumar is now, look, you can see that. You can see that frustration is coming on. He's passing on comments, exercising his lips.
You're not backing me. What can I do with the ball? You conceded two easy ones, and take a look again. These are the two teams in today's game. Ishtiyaq Rasool, Asif Manzoor, Nasir Kumar, Rubashir Waitele, Yashgar Gawalegi, Uwais, Web Amali, Akif Jahangir Lon, Puneet Kumar, Ankush Bandral, Anuj Kumar, Ramdayal, Rohan Kol, Suryansh, Umar Lepti, Pawan, Rajat Sharma, Faizan Button, Munib, Munaf. Munib and Faizan coming into the side of Hillview Rajouri. They coming up with two local lads here. What can Faizan and Munib do today? But at the moment, it's been ruthless. It's been one-sided affair to me, as we're at halfway mark, and Royal is a put on, stitched at 139 with just 2 wickets down. They're back into their prime, and these are the updates coming you with the toss earlier on won by Hillview. Good toss to win. Can we call it a good decision to make or a bad one? मनोहर भाई, आपके स्क्रीन के सामने अपने श्रोताओं के सामने टॉस जीतकर पहले आमंत्रित किया गुडविल को, और एक जिसे हम कहते हैं कि बिना परवाह किए जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की है, विकेट को सुरक्षित रखा है, बेहतरीन बल्लेबाजी की है, शानदार प्रदर्शन किया है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ साफ झलकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आपने देखा कुछ फील्डिंग लैप्स, वो भी कप्तान से, एक ही प्रकार की फील्डिंग, एक ही प्रकार के स्ट्रोक पे, और यह नरवानी द्वारा 2 बार प्रयास आपने ट्राई किया, जरूर था तो शायद सफल होते, पर ऐसा हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर अच्छा क्रिकेट, और पूरी तरह से इस पहले सत्र में तहस नहस कर दिया है गेंदबाजी को बल्लेबाजों ने। जहां तक रॉयल गुडविल का सवाल है, 140 लगभग रन संख्या पहुंच चुकी है 10 ओवर में, और 8 विकेट सुरक्षित अगले 10 ओवर। भले ही क्रिकेट महान अनुशंसाओं का खेल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए। पिछला मुकाबला हमने देखा वो 198, हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था कि एक विशालजनक स्कोर, इसको चेज करना आसान नहीं है। भले ही 4 रन से जीडी टाइटंस ने मुकाबला हारा, पर एक टक्कर थी, अंत तक लड़े, तो क्रिकेट की खूबसूरती, अंततः क्रिकेट की जीत हुई, उसमें कोई दोहराई नहीं है। यहाँ आपको विकेट चाहिए, क्योंकि आप गेंदबाज को बैक करेंगे, आपको फील्डिंग बहुत बेहतर करनी है, तभी जाकर के वो अतिरिक्त दबाव से बच पाएंगे गेंदबाज। पर वैसा हुआ नहीं, फील्डिंग में लैप्स हुए, हर गेंदबाज पे दबाव आया, कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी, अटैकिंग क्रिकेट सामने से, एक अच्छा मुकाबला, पर एक बड़ा लक्ष्य इस विकेट पे, वो भी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भेजना दूसरी पारी में जब आप बल्लेबाजी करेंगे, वो आसान रहने वाला नहीं है, क्योंकि गुडविल के पास बल्लेबाजी बहुत बढ़िया है, और उसके साथ साथ गेंदबाजी कमाल की। इसमें इश्तियाक रसूल हैं, आकिब मीर हैं, यश गर्ग हैं, वैभव माली हैं, तो आपके पास विकल्प भी हैं गेंदबाजी में भी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़रूर जहन में रखनी है यहाँ पर हिलव्यू राजौरी को। दूसरा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है 10 ओवर का। नासिर बशीर 40, आकिब मीर 19, मात्र 8 गेंदों से। और ये होता है कि जब शुरुआत आपको बेहतर मिलती है, एक आक्रमण ठोस शुरुआत, मजबूत आधारशिला, तो फिर मध्य क्रम पे किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता, खुलकर आकिब मीर स्ट्रोक ले रहे हैं, डाउन द ट्रैक आ रहे हैं, स्टेप आउट करके बाहर निकल रहे हैं, कुछ बेहतरीन और शानदार उन्होंने स्ट्रोक खेले हैं। ये इसका कमाल ज़रूर है बल्लेबाज की, अगर हम बात करें, ये उनकी क्षमता भी है, ताकत भी, और जब आपको इस प्रकार से बैक मिल जाए और इस प्रकार की कहानी बीच में आ जाए, तो फिर दम ऑटोमेटिकली आ जाता है बल्लेबाजी में, ऊर्जा का संचार तो हो ही जाता है, और वो चीज़ कर दिखाई है यहाँ पर इन दो बल्लेबाजों ने। 139 पे 2-10 के बाद 11वें की शुरुआत। अनुज कुमार 2 ओवर 30 रन 1 विकेट। गेंदबाजी विश्लेषण, मुनीब मनाफ का इस्तेमाल किया जा रहा है गेंदबाजी में। क्या मुनीब मनाफ एक अंतर पैदा कर पाएंगे यहाँ, ये बड़ा प्रश्न होगा। क्या प्रभाव छोड़ पाएंगे बल्लेबाजों पर, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर शांत ये पूरी टीम इस समय हिलव्यू राजौरी की। उसका कारण यह है कि विकेट नहीं मिले हैं, मात्र 2 विकेट इश्तियाक रसूल और ओवैस के रूप में, पर पूरी तरह से डैमेज कर चुके थे शुरुआत में गेंदबाजों को। ऑफ मिडल स्टंप पे खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, सिंगल के लिए दोनों बल्लेबाज 1 रन और चहलकदमी करते हुए आकिब मीर पहुंच गए 20 पे। रॉयल गुडविल लगातार एक बड़े लक्ष्य की ओर, 275 प्रोजेक्ट स्कोर जो करंट रन रेट है इसके मुताबिक। इस बार अच्छी गेंद थी स्टंप्स पे, ओ दिशाहीन थ्रो, सटीक स्टंप्स पे रखता तो निश्चित तौर पे यहाँ आके मीर को वापस लौटना पड़ सकता था, क्योंकि स्टंप्स पे सीधा थ्रो तो खतरे वाले एंड की ओर दौड़ रहे थे। मुनीब मनाफ का चयन किया गया गेंदबाजी में, ये पास में खेल करके दौड़ पड़े। यहाँ देख लीजिए, ये डायरेक्ट हिट लगती तो काफी दूर थे क्रीज से, वहां पर आके मीर पर सुरक्षित अब क्रीज में सामना करने के लिए तैयार। मुनीब मनाफ की अगली गेंद का नॉर्दर्न पवेलियन से गेंदबाजी, आकिब मीर 20 पे सामने। मुनीब मनाफ का ये पहला ओवर, अब तक 2 रन खर्चे हैं। ऑन साइड में अच्छा स्ट्रोक, एक सिंगल के लिए भागे, दूसरे की मांग पर केवल 1 ही रन मिलेगा। 1 रन और खाते में, लगातार
अच्छी रणनीति बल्लेबाजों की, सिंगल डबल्स को भी अब साथ साथ चला रहे हैं इस पारी को सिंगल डबल्स के चलते, और एक एक रन की आवश्यकता भी है। देखिए आप रोटेशन भी करें तो उससे भी आप अपने आप को दबाव से दूर रख पाएंगे, और विपक्ष पे फील्डर्स पे दबाव जरूर आएगा। वो कोशिश इस समय नासिर कुमार और आकिब मीर की। कुमार 41 पे सामने, यहाँ पर देख लीजिए रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास था, पर रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, स्टंप्स भी खेले जरूर थे उन्होंने, पर सुरक्षित। हालांकि थर्ड अंपायर को रेफर निर्णय किया गया है, देखना होगा थर्ड अंपायर का निर्णय, क्या यहां स्टंप आउट करार दिए जाएंगे नासिर कुमार, ये देखना होगा। मुनीब मनाफ के विरुद्ध थर्ड अंपायर अभी भी उनका निर्णय आना बाकी इस मैच में। ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 वर्ष, प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। देखना होगा यहां चेक किया जा रहा है अभी भी। सुरक्षित क्रीज में नॉट आउट का निर्णय आता हुआ, आके मीर सुरक्षित, मुश्किल बचे जरूर यहाँ पे, भाग्य ने साथ दिया, और इस प्रकार से 142 पे 2। एक 2 विकेट, नासिर बशीर 41-23 गेंदों से। मुनीब मनाफ अब तक 3 रन खर्चे, अच्छा ओवर गया मुनाफ का। यहाँ गैप में गई है गेंद, और गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक, चौका मिलता हुआ कुमार को, 45 पर पहुंच गए। रॉयल गुडविल की टीम एक विशाल जनिक लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए। मुनाफ ने पिछली 3-4 गेंदें बेहतर की थी, पर यहाँ ऑप्शन से थोड़ा बाहर हल्का सा उछाल भी था, जगह मिल गई स्ट्रोक के लिए गैप में। वो प्रयास फील्डर का था, पर वहां से छिटकी गेंद तो सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 ओवर मिले रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब, 143 पे 2, 11वां ओवर। या फील्डर तैनात, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, ओवर की समाप्ति 11 समाप्त, 143 पे 2 रॉयल गुडविल। $11 hours gone. They're still going 13 and over. Looks like they're going to persist with the same current rate. More than 10 over, they will finish around 250. And that won't be easy. That's going to be difficult one. One that will take doing, that will take character. Right now, there are 9 overs with 8 wickets in hand. 54 balls at their disposal. 2 different characters in the side. Nag bats his own style. He has his Ras style and going after the bowlers. And Nasir Bashir Kumar. And this is the simple thing that is going to distinguish these two lads. The one who knows how to put premium on his wicket. He bats sensibly when he gets his eyes in. And on the other side, if we talk of Nag believes in power, wide range of shots. He always tries to ensure that I'm on top of the bowler. He's trying to ride on the attack. Going after each and every ball. Not keeping the thing in mind that I have to put premium on my wicket, and my wicket matters the most. That one deep in crease. And Nasir now trying to take that responsibility. He's got Akib Mir, who's batting on 22 for 11 with a strike rate of 200. Akib is a different batter. He will build it brick by brick, step by step, run by run, ones and twos, doubles. At times he's going to look for threes. This time Nasir trying to launch. It could be tight, but Akib is so quick between the wickets. His fitness is something so nice and beautiful. And one would love to be part of that and admire those skills. He's good and quick between the stumps. 148. Dig out nicely. As well, Ankush Pandral is bowling here, and Ankush is trying to put brakes on
His name is Ankush. Is he going to be the one who will bowl cautiously and keep things tight? 2 for 148. And this time he's tampered. And he's beaten by Ankush Bandral. He gets better off Aqib Mir. One who's technically sound is gone, is undone. Can't control his adrenaline flow. He decided to take him on. Trying to break free again, and it's the bowler who has deceived him. Wicketkeeper was right there. Who does well, does the remaining job well. Look, that one, he beats him in the air there. Flighted one and bit outwards. Aqib trying to make room and was eyeing that over cover area, and that brings the Jahangir Lone in at number 5. The famous cricketer in the valley. He was again trying to go over extra cover. That is his zone, and he loves that area. He's in deep love with extra cover portion, and it's where he finds himself at ease, going up to the ball and making room, showing that audacious and the audacity, going with that nice balance and excellence. He has that positive approach when he bats, and he knows how to score in front of square on offside. That is the area he loves. Although he scores across the ground, and he has that ability to go for those lap shots, the reverse lap, or the one we call that switch hit, or that scoop shot that also comes into play, the ramp shot. He has all the shots, but today he's deceived by Ankush Bandral. Heads up to Ankush as he removed Aqib Mir. Jahangir Lone is in at 5. With a slip in place. Goes with a straight bat, not for runs. Ankush can't believe, but Jayak blocks it. And he's yet to open his account. Little smile on his face. He's back on the field after beginning his second innings of his life. And he's back on the field with bat. Well, it's 148 on the board after 12 overs. 8 overs are going to come. Jahangir Lone trying to bat with a straight bat. That's important, and that's the essential thing at the moment. The only way to accommodate his team, to help his team under certain circumstances here, as they're 3 down with 148 on the board. Plenty of overs to come. There are 7 wickets in kitty. Resources are there. They're very rich at the moment. That one, it's hit hard. Straight into the side screen. And Nasir Kumar gets to his 50. It's half century of 28 balls. He's on to 52. Easy pickings for Nasir Kumar. Munib Munaf. Produced that back off a length. Easy pickings. And drilled straight down the ground. Nasir Kumar, he saw that, his eyes lit up. He thought that this will go the way, and it goes all the way. That one, that's a good shot again. But there is production. Can't beat the man. Unable to pierce the gap on offside. Ram Dayal, who took that catch of Nag earlier on. 52. Batting with a strike to 179. 8 fours and 2 blistering sixes to his name. Next one, a soft hand. So they're going to look for 2 here. Nasir is so quick. And in the end, it's a couple for Nasir and team. 150 comes up. It's 156 in over number 13. 3 down, and Nasir Kumar is now trying to up the tempo a little bit. He has gained that confidence. Now he's trying to benefit his side with every passing ball. That's a low full toss. Swept. Will just be 1. Runs are coming. Thick and fast. No look back. No respite. We saw a couple of wickets going down. But the batters are scoring runs at will. Whenever they want to hit it, they're able to hit it. And they're getting the balls in the desired areas where they can launch it. अच्छे खासे रन संख्या स्कोर बोर्ड पे जहांगीर लोन के लिए नीची गेंद पड़ने के बाद रहते हुए सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के
और जहांगीर लोन ने इस मैदान पे एक अच्छी पारी खेली थी अथवा इंडिया 11 के विरुद्ध। उसके बाद अगले मुकाबले में उन्हें अवसर नहीं मिला था और अब जाकर के इस बड़े मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करना जरूरी है। 157 पे 3 ऑन साइड में गई है गेंद, अंदरूनी भाग लगा, बल्ले का निचला भाग लगा, एक सिंगल मिल जाएगा, 1 रन। और पर रन संख्या की बात हो रही थी तो एक अच्छा खासा लक्ष्य अभी तक खड़ा किया है 13 ओवर में रॉयल गुडविल ने। हालांकि वो आमंत्रित तौर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हिलव्यू राजौरी के विरुद्ध 158 पे 3, 13 समाप्त, 7 ओवर का खेल, 7 विकेट सुरक्षित। ओवैस अहमद, इश्तियाक रसूल, आकिब मीर, ये 3 खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। नासिर बशीर 55 पे, ये दूसरे ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने अर्धशतक पूरा किया हो। हालांकि कल पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी 2 अर्धशतक पहली पारी में देखने को मिले थे, जहां आबिद मुश्ताक और यावर हसन ने अर्धशतक पूरे किए थे। फिर दूसरी पारी में इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से अर्धशतक आया था। तो 3 अर्धशतक उस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देखने को मिले थे और यहाँ 2 पहली पारी में। और देखना होगा क्या इनमें से एक बल्लेबाज 7 ओवर में, हालांकि नासिर कुमार के पास क्षमता है कि 7 ओवर में अगले वो 45 रन बना करके दूसरे ऐसे खिलाड़ी बनेंगे इस प्रतियोगिता में जो शतक पूरा करेंगे। मात्र 1 शतक अभी तक इस टूर्नामेंट में, वो साहिल शफी के नाम। सामने सीधे बल्ले से खूबसूरती के साथ बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, पर पीछे फील्डर तैनात, पलटकर दूसरे रन के लिए जहांगीर लोन और नासिर कुमार। 2 रन और जहांगीर लोन का व्यक्तिगत योग अब 3 पे 4 गेंदों से 160। 14वां ओवर प्रारंभ हो चुका है। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास, अथवास रिटेल और अथवास विद कॉन्फिडेंस। जहांगीर लोन का प्रिय स्ट्रोक खूबसूरती के साथ, कोई मौका नहीं, फील्डर आए पर गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ 4 और खाते में। 4 रनों के साथ ये खूबसूरत कमाल का स्ट्रोक। अब फील्डर वहां पर पहुंचे जरूर, पर गेंद उनकी रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी और सीमा रेखा से बाहर निकल गई। चौका मिला, 4 और खाते में 7 पर पहुंच गए जहांगीर लोन। इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, बड़े स्ट्रोक के लिए वो जरूर जाएंगे। इस पर सीधे बल्ले से उठा करके खेला, फील्डर के सर के ऊपर से पीछे फील्डर एक और तैनात, जब तक वे गेंद को फील्ड करते। सिंगल और अच्छी रणनीति, पिछली गेंद पर चौका, इस गेंद पर सिंगल। 55 पे नासिर बशीर सामने 165, 3 विकेट पे 13.3। कुमार 55 पे सामने 7 रन आए हैं 3 गेंदों से, बड़े के लिए जाएंगे। जी हाँ, अच्छा स्ट्रोक, पर पीछे फील्डर तैनात हैं। रामदयाल गेंद को फील्ड कर लिया दयाल ने, पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए वहां नासिर और जहांगीर लोन का। 1 रन के साथ 166 पे 3। इस ओवर में 1 चौका आ चुका है, 2 सिंगल 1 डबल, कुल मिलाकर 8 रन 4 गेंदों से आए अंकुश बंदराल के। 1 विकेट बंदराल को मिल चुका है। 1.4 में 10 रन उन्होंने खर्चे हैं और 1 विकेट भी मिला है। जहांगीर लोन 8 पे, नासिर बशीर 56 पे। हालांकि जावेद जड्डू सबब थे, आज टीम का हिस्सा नहीं है। 56 पे नाबाद, 32 गेंदों से 8 चौके 2 छक्के, 175 का स्ट्राइक रेट। कमाल के खिलाड़ी, कमाल की बल्लेबाजी नासिर बशीर द्वारा। 13.4, 166 पे 3। 2 गेंदें बची ओवर में अंकुश बंदराल के सामने जहांगीर लोन। कुछ बड़े प्रहार, विस्फोटक अंदाज, यहाँ एक बड़ी पारी की आवश्यकता। ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, उस गेंद तक पहुंचे जरूर, दूर से ही, शरीर से दूर धकेलने का प्रयास था और दूर से ही उस गेंद तक पहुंचने का भी प्रयास। हालांकि एक सिंगल मिलता हुआ 1 रन और 167 पे 3, 241 प्रोजेक्टेड स्कोर जो करंट रन रेट है। इसी रन गति से यदि रन बनाती रही टीम रॉयल गुडविल, एक विशाल जनक लक्ष्य खड़ा करने में सक्षम होगी इस दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। बंदराल आखिरी बार इस ओवर में, एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक, गैप में पीछे फील्डर पर कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और चौका नासिर बशीर के बल्ले से, 60 पर पहुंच गए नासिर बशीर। बंदराल के विरुद्ध यह चौका, बेहतरीन बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी और तेज हवाएं अगर देखा जाए तो चल रही है इस समय। वो जो सामने शामियाना और वो इस समय हवा की ताल पे नाचता हुआ, वो दर्शक वहां से जरूर इधर उधर बिखरे जरूर हैं।
ये काफ़ी तेज़ हवाएं इस समय चल रही हैं मैदान के बाहर। अगर उस पश्चिमी और उत्तरी छोर पर देखा जाए तो काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है। 171 पे 3 14 ओवर की समाप्ति। रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब। कुमार 60, जागीर लो 9। 36 balls are going to come. Lon is getting into touch here on to 9 of 7. Nasir is in sublime form. Goodness gracious for Nasir and his team that he's on to 60 of 33 balls. It's been in fine form. Will he carry it till the very last ball? Beaten on that occasion, Jahangir Lon. Lucky that one didn't found an edge. Just goes past, missed by a whisker. Wicketkeeper up to the stumps. Now this time he goes across the line and he goes aerial. And it hits the signage on that portion for a maximum. What a shot. The trademark slog sweep comes out and he hits it. There is the signage. It goes straight and hits the signage. Knee knelt down on one knee. There it is. And people on that portion, the spectators over there, they're enjoying. The next one, that one again. That's aerial. This time it's so wide of mid-on. 6 number 2 of the over. Mudib Munaf is surprised. The second shot comes out. Knelt down on one knee yet again. But this time the area is different. Another one that gone over mid-wicket. This time over long gone. The man is finding his form. And the second of the over. It's windy out there. It is in a gentle breeze. It's windy at the moment. Spectators, they're dispersed from that tent area. In the meantime, Munib again. He is going to be under pump. This time wide of the off. Once again knelt down on one knee. He's ready there to do this. Once again going down his knee. Trying to hit it and Munib trying to keep it away. He does well. He was eyeing to keep it wide of the off. But that's gone wrong again. Pressure is on ball. 184 for 3. This time he goes with a soft hand to long on. One more run. 185 with 5.2 balls remaining. 32 balls remaining and it's 185 on the board. Looks like 250. Even more than that. And they're going to try. Believe me, having 7 of the batters in kitty, they will try to push. Because it's a great game of cricket and it's the quarter final at stake. निश्चित तौर पे इसमें कोई दौराई नहीं क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी, जिस प्रकार की क्लीन हिटिंग, इस बार विकेट कीपर से चूक और गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर। यहाँ उपहार के रूप में मिल जाएंगे कुछ रन। चौका मिलता हुआ 4 और खाते में और 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई। रन संख्या की अगर बात करें तो लगातार बढ़ती। और पिछले अपने लीग की अगर हम बात करें, 4 मुकाबले जीते हैं रॉयल गुडविल ने। ये 5वां मुकाबला है कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता में उनका। हालांकि पहला क्वार्टर फाइनल वो खेल रहे हैं, दूसरा क्वार्टर फाइनल इस समय चल रहा है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब द्वारा। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला 64 पे कुमार, 189 पे 3। एक बार फिर इस बार कुमार के बल्ले से लीजिए एक और चौका। 4 और खाते में जोड़ लीजिएगा। 193 पे 3 रनों की बरसात इस समय बख्शी स्टेडियम में देखने को मिल रही है मुनीब मुनाफ के विरुद्ध। और मुनीब मुनाफ की अच्छी खासी खबर ली है इस ओवर में। इन 2 बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी उनके विरुद्ध, क्योंकि अगर जिक्र किया जाए तो पूरी तरह से उन पे हावी समय बल्लेबाजी। इस ओवर में भी कड़े प्रहार। और मुनाफ ने 3 ओवर में 39 रन खर्चे। 13 रन उनका इकॉनमी रहा है 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से। कुमार 68 पे 35 गेंदों से, जहांगीर लोन 22, 193 पे 3। 15 ओवर की समाप्ति। आखिरी 5 ओवर 50, तो फिर 240 243। कोशिश जरूर होगी वो जो आपने जिक्र किया 250 तक पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि उसके पीछे ऊर्जा और ये जरूरी है, क्योंकि ताकत का इस्तेमाल जरूरी यहाँ पे। और विकेट आपके पास 7 सुरक्षित हैं। जब आपके पास 7 विकेट सुरक्षित हैं तो फिर एक प्रयास जरूर होगा ज्यादा से ज्यादा यहां पर लक्ष्य खड़ा करने का। Three for 193. Jahangir Lone is batting on 22 of 11 balls. We saw Akib Mir earlier on. He was batting on 22 of 11. Later on, he faced a couple of balls before getting out. Now Jahangir Lone is batting with a strike rate of 200. Trying to replicate, and he has done that. What Akib was doing earlier on. Only thing
that remains to be seen. And people are going to anticipate to it what he will do now. Is he going to follow the pattern of Akib, and will he continue to bat the way we saw a couple of sixes coming in that over? The previous one that we saw, it was sent in by Munib Monoff. Here is Ramdayal with a fresh over. Full toss, aerial he goes, and two men ended up as mute spectators over there. It's gone into the cover boundary for a maximum. Look at the spectators over there. Moves to 28 of 12 balls. And Jack Lone and his show continues here at the center. Full toss, gone wrong. Gone for half a dozen. He puts him off with a wonderful hit, one-handed. 199 on the board, 29 balls remaining. First ball 6. Jahangir Lone on to 28. He's at just 12 balls. Full toss again. Leading edge. Low bit up. There is a man. There is a man. And here comes the wicket number 4. There it is. Jahangir Lone is taken by Rohan Cole. Wicket number 4 down. Leading edge. Low bit off. Gone on 28 of 13 balls. Misread that one. It was another full toss. This time bit leg side. Look. And he misread it completely. And he closed the bat face early. Off the splice. Low bit off. Blown up in the air, and man is there to take control. He's unhappy, disgusted, and there it is, a little smile passed on while going past Ramdayal over there. Ramdayal telling him that, bye-bye, you did well. Time the man here who's gonna celebrate it, and he deserved that. Time to rejoice for a while. They were under the pump again. Brutal hitting. Some wonderful shots. Character and technique displayed by the batting side. Bowlers unable to control and contain the batters. They kept leaking, bleeding from ball 1 till over number 16. It's been the same story with plenty of overs remaining. 28 balls are going to come. 4 overs and 4 balls. Still enough time left in inning number 1. They have 6 of the batters in kitty. I believe they will carry on and continue. They will have to do that. It is the simple idea, and I call it funda. And they will try to believe in it, as they have an opportunity to finish around 250, and should finish around that as the foundation is laid. Webb Mali is the new one. He walks in number 6, replacing Jahangir Lone. It's windy at the moment here at Heart of Steel. 199, one shift 200. Webber is in trouble, but he's home, he's safe. And ball is running down to the other side. It's 200 up for Royal Goodwill after 15.3 balls. It took 15 overs and 3 balls. They lost their 4 wickets, and it's 200 up. It's another milestone, an achievement. And they're gaining and gaining. It's all gain, and if there is a pan for someone, it's all gain for batting side, and pan for the bowling unit, as they're leaking badly. It's 200 up. Look at that shot. Cuts well, beats the man into the fence for 4. 204. Nasir on to 72 of 36 balls. Is he going to continue? He's batting with a strike rate of 200. Will he be able to carry on and continue? Is he going to persist? Will he show some resilience? Square cut. The man at point boundary unable to stop the ball. As he beats him. That was hit hard. There is little change in the field on offside. Looking to cover up. As Nasir is going hard. This one through the line. There is a man at long on. Only a single, and he keeps it down to a solitary single. Ankush is there. 205 for 4. Nasir on to 73. 200 पार कर चुकी है टीम रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब. वैभव माली और नासिर बशीर आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज. जहांगीर लोन 23 रन 28 रनों की पारी खेली और चौथे विकेट के रूप में मैदान से बाहर चले गए. 205 पे 4. रामदयाल 1.5 में 26 1 विकेट. 12 रन आ चुके इस ओवर में.
यहां रन नहीं मिलेगा, अंतिम गेंद पर रन नहीं आया, 12 आए, ओवर से 16 समाप्त, 205 पे 4, रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब। आखिरी 4 ओवर का खेल बचा है और देखना होगा वैभव माली और नासिर बशीर। यह महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। 214 सर्वाधिक स्कोर है पिछले लीग मुकाबलों की अगर बात करें, अब तक के इस टूर्नामेंट की बात करें, 214 सर्वाधिक स्कोर उसको पार करना यहाँ पर, हालांकि अभी 4 ओवर हैं तो निश्चित तौर पे वो पार कर सकते हैं यहाँ पर टीम रॉयल गुडविल। 73 पे 37 के दूसरे पर। अब यहाँ प्रश्न ये है कि नासिर कुमार जो कि अब 27 रन दूर है अपने शतक से और मात्र 1 शतक अभी तक आया है इस प्रतियोगिता के अब तक के मुकाबलों की अगर हम बात करें। साहिल शफी के बल्ले से 106 रन उन्होंने एक लीग मुकाबले में अभिजीत रहते हुए बनाए थे। उमर लेफ्टी 2 ओवर 19 रन, एक बार फिर उनका चयन दूसरे स्पेल में। ये बारी का 17वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। 16 के बाद 205 पे 4, क्या बल्लेबाजी की, वो विस्फोटक अंदाज। शुरुआत में ओवेस और इश्तियाक रसूल आक्रमण की अर्धशतक की पारी खेली और उसके बाद फिर आकिब मीर ने कुछ बेहतरीन स्ट्रोक खेले, जहांगीर लोन ने भी, और नासिर कुमार अभी भी अभिजीत हैं 73 पे। तो सभी बल्लेबाजों का आज एक बेहतरीन योगदान रहा हिलव्यू राजौरी के विरुद्ध। नए ओवर की शुरुआत उमर लेफ्टी पहली गेंद लेकर के कुमार के लिए। इस बार खेला जरूर ड्राइव किया, पीछे फील्डर तेजी के साथ दौड़ पर 1 रन के लिए पलटकर दूसरे रन के लिए और तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया। बहुत ही बेहतरीन दौड़ लगाते हुए 2 और खाते में 207 4 विकेट पे 17वें ओवर में, और कुमार पहुंच गए 75 पे 38 गेंदों से। 1 रन बनाया वैभव माली ने और वैभव को अब सहयोग करना होगा, समर्थन देना होगा, एक एंड पे खड़े रहना होगा। और नासिर कुमार धीरे धीरे से शतक की और 25 दूर। एक और खूबसूरत बेहतरीन शानदार और गेंद वहां पर 2-3 टप्पों के बाद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और चौका। शानदार बल्लेबाजी कुमार द्वारा। आज गजब के फॉर्म में दिखे, बेहतरीन प्रदर्शन उनका दिखा, लय में दिखे, ताल में दिखे, हर प्रकार के स्ट्रोक उन्होंने लगाए। सफलता भी मिलती हुई इस बल्लेबाज को। 79 उनकी व्यक्तिगत रन संख्या और अब 21 रन दूर अपने शतक से। 211 पे 4, 16.2 के बाद। एक और बेहतरीन मधुर आवाज बल्ले से, पर पीछे फील्डर रामदयाल, सिंगल मिल जाएगा, 1 रन और कुमार अब नॉन स्ट्राइक की चोट पे 80 पे 20 रन दूर। ये दूसरे से खिलाड़ी होंगे जो शतक पूरा कर पाएंगे जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस 2025 वर्ष। Umar lefty conceded 26 in his third over. He's also expensive and all gone for runs. Umar in search of a big through, straight down the ground. Good looking shot. Is he going to beat the man? It does. The long on is unable to prevent that. It's Munib Munaf this time. 216 and Weber Mali driven straight. Just so over the man at non-strike end. Over his head and straight into the long on boundary. On drive, yielded a boundary. 4 runs accrued, and that's what he needed. 216 for 4. This 11, already of it. As well, shuffle across in the gap. 2 is pretty on. The second is very on, very much on, and with that, there is a brace headed to the tally. 218. With a ball to go in over number 17. Weber on 7 of 4 balls. 8, 10, 12, 13 of 5 balls. He's gone for 32, wicketless. Umar lefty one last time in his third over. Weber hits it. Hit hard. But there is production. Just a single. He will keep the strike for the next over. 17 overs are done. Royal Goodwill, after being put into bat, they added on 219 at the cost of 4. 3 overs to go, 18 balls, and Nasir Kumar is on 80 of 40 balls. He continues to bat with the strike rate of 200. He's just 20 runs away. Is he going to be the second centurion of the tournament? The early individual best score of the tournament, it belongs to Sahil Shafi. That's of 106 unbeaten. And is he going to go past that? Remains to be seen with 18 balls to come, and Nasir is 26 away from achieving that milestone. And is he going to go past Sahil Shafi? Then he need 27 around that. To level, it's he need 26. To go past, he need 27.
What will he do? It's gone cloudy here. Who knows? Maybe raining this evening. But right now it's gone. We can say that it is gone cloudy at the moment. It's overcast and overhead. Maybe. Well, let's see. But at the moment it's windy. It's cloudy. Overhead, overcast. And looking at the sky, it's gone cloudy. No more sunshine. Sun is behind the clouds. Cloud cover is getting heavy. It's 219 on the board for the loss of 4. Weber Mali betting on 8 of 5 balls. Ramdayal has got the ball. Economy of 13. He has picked up a wicket. And economy is telling us that all were expensive. And there is nothing new when it comes to the Omar lefty. He gone for 30 plus of his 3 overs. All conceding runs. And it's 219 with 3 overs to go. They're going more than 10 and over. They're going... look at that one. Weber Mali, the first ball of the fresh over. Not looking for the second. As Phil race quickly onto the ball. Does well. Keeps it down to 1. We're talking about that. They're going more than 10 and over. They're trying to maintain that current rate, the discipline. They're going 12.82 and over. That's the current rate. It's fast, furious, tremendous, pacey, rapid, gorgeous, glorious. And bowlers leaking, bleeding. 220. Nasir hits it through the line. Call is for 2. Will it go past? Fielder is so quick. He does well. Save 2 runs. With that brace, Nasir is on to 82. 18 away. With 16 balls remaining, will he find that mark of 100 today? It's 2-2-2 for the loss of 4. Interesting figures. 222. With 4 wickets down. Nasir Bashir Kumar, 41 balls, 82 runs. Just 2 sixes and plenty of fours. $222. He's not going for a single here. I think he's eyeing a century here. Will he get there? That remains to be seen. That's going to be interesting. Will he make it to the 100? It's going to be the second one to get there. An achievement. It's 222. Not going for a single there. It is Ramdayal again. This time takes it on the full. That's Ariel. Will it go past it? There is a feel he does well once again. Cuts it off and keeps it down to 2 again. 84 of 43. And with that, he's 16 runs away. He's got 2 more overs to come. But he's eyeing to get somewhere close to 90. Then he will try to take bowlers on in the remaining. All right, taken to the cleaners today. It's been a clean hitting. And it's been immaculate from batting side. Isn't? Excellent show. बहुत ही बेहतरीन आक्रामक शैली से बल्लेबाजी की है नाग ने और उनके साथ साथ इस समय नासिर कुमार जो 84 पे बाद बेहतर बल्लेबाजी इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे अंदरूनी भाग लगा पर फिर भी चौका मिल जाएगा यहाँ पर 4 और खाते में नासिर बशीर के 88 पर पहुंच गए 44 के दूसरे 200 के स्ट्राइक रेट से लगातार बल्लेबाजी इस बल्लेबाज ने की है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के लिए रामदयाल के विरुद्ध और नीची जरूर रही थी और 4 रन और खाते में 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है और कुल रन संख्या 228 4 विकेट पे 17.5 के बाद इस ओवर में 9 रन आ चुके हैं सिंगल डबल फिर डॉट फिर डबल फिर चौका आखिरी गेंद ओवर की 88 पे सामने नासिर बशीर रामदयाल 35 रन कर जाए 1 विकेट 2.5 में फुल टॉस लीजिए उड़ा दिया इस गेंद को काफी ऊपर हवाई यात्रा पे सेंट्रल पवेलियन जो यहाँ एंड है उस पे जा लगी है गेंद एक और छक्का कुमार के बल्ले से और इस छक्के के साथ वो पहुंच गए 94 पे कमाल का स्ट्रोक था फुल टॉस थी और पूरी तरह से इस पर टूट पड़े बल्लेबाज नासिर कुमार और कुमार पहुंच गए 94 पे 18 ओवर की समाप्ति रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब 234 पे 4 नासिर बशीर 94 पे 45 गेंदों से 14 चौके 3 छक्के 208 का स्ट्राइक रेट 2 ओवर का खेल बचा है
brilliant. One of the best. Incredible, fantabulous, lovely innings. Dashing. And bowlers finding it hard against the likes of Nasir Bashir. On to 94, 1-6. And he's going to be there. Will he get there in this over? 12 balls are going to come. And Royal Goodwill are 234 with just 4 wickets down. 6 wickets in kitty. Nasir Kumar need one big shot. And that's going to be 100 for Kumar in today's game. Into the 90s, nervous 90s. Kumar begins the fresh over. First ball, Weber throws his bat at it. Over point. Into the fence. 4 more to start the fresh over. Omar is trying to keep it away from the batter's arc. But Weber Mali is so clever there. Good at it. Inside the line. Shuffle across. He was already on to the off stump. Then hits it away over point. Gets 4 for that. And Weber knows that he has to hit the bat. He has to hit each and every ball. He's throwing his kitchen sink at everything. And that's aerial. That's uppish. But it's gone down towards wide of long off. Nasir says, just a single. That's important. That's what I needed from your side. A kind of favor. Thank you very much. On strike. Nasir Kumar. 239 for 4. This is 19th over. 10 balls remaining. Hillview Rajouri under the pump on the receiving end. Receiving some serious treatment from batters. Oh, that's a good shot. Superb cut shot. Moves to 95. Fielder does well. Keeps it down to a solitary single. He was eyeing a boundary there. Would have been a 4. But Ankush does well. Save with 3 runs. And Nasir will remain on 95. Unbeaten 95 of 46 balls. The highest score of the tournament. From any side. It's 240 now. That belongs to Royal Goodwill. Earlier best was 210. 214. That one flicked away. Where is this one going? That's gone over scale leg for a maximum. Another 6 coming. It's up the bat of Weber Mali. Already a 4 in this over. Now a 6 again as to my lefty. Weber Mali flicked it. And that's gone aerial. That's gone flying. High. And into the stands. And there it is, the grandstand on that portion where we have that beautiful tent on to keep that shade. And where spectators can feel at ease and enjoy the game of cricket. They're under the shade of the tent. And it's gone straight into that portion. And now they're trying to help the ground stop to bring the ball back. It landed onto the tent. It's taking time to bring it back. 246, 4 runs away from 250. And team's 250 isn't that far again. Going in the same direction, doesn't connect. Unable to get hold of that. Doesn't get hold. Doesn't connect. Would have been somewhere in the stands on that portion. Just 4 runs away from 250 mark. Royal Goodwill. What an innings. One team going after the other team on the receiving end. Just conceding runs, boundaries, 4 or 6s. Everything going their way. It's 250 up. 20 over number 19. Weber Mali, another cracking shot. He's under 24 of 11 balls. And Nasir Kumar is just 5 runs away. Kumar. What a batter. Batting with such confidence. It is 6. He has reversed his decision there. And that's given as a 6. It's 252, 20 over number 19. Nasir Kumar need just 5 runs to complete his 100. Iconic Bakshi Stadium. Five runs away. And they cross at the mark of 252. The highest first inning score of the tournament. Red Premier League Season 2. The title sponsor, JK Super Cement. Presented by Athwas. With confidence
Athwas Retail and Athwas with confidence. 252 for the loss of 4. In local cricket, they're the best in the business. They got all the basics. They got some of the big names in the lineup. First ball of the fresh over moves to on to 99. Nasir Kumar need 1 run to complete his 100. He's going to the second one to get there. Just 1 away. Cracking shot, 5 balls remaining. And Nasir Kumar is just 1 away. It is Rajat Sharma to bowl the final first ball. What a shot. Crouch low again. He's bending his knees perfectly. And executed that one nicely. Moves to 99 of 47 balls. And it is going to be the quickest 102, I think. And he's on to 99 of just 47 balls. And here is the next one. And Nasir gets there, the quickest of the tournament. The Centurion number 2, the second 100 of the tournament belongs to Nasir Bashir Kumar. He takes up the helmet, waves his bat towards the dugout and absorbs that round of applause. He deserves that, and he's going to kiss the turf, bend as before the mighty Lord, thanking heavens for that wonderful 100. What a knock and what a turnaround it has been. And he graced that and embraced that knock with a wonderful single, and he's there. The quickest to the 100, quickest to the 50. It was earlier on Nag. Now he's the quickest to the 100 in the tournament. It's Nasir Kumar. He's brought up his 148 balls, 15 fours and 3 sixes. Strike rate of 208. Immaculate. Fantabulous and kaboom. That one. Leading edge is going to run down. Fielder after it. Will he get to the ball? And ball did stop a bit. And it was lacking that pace. In the meantime, they're back for the second. And with that, he's on to 102. No, he is going to face the next one. As we saw, Wabber Mali and his counterpart, they scampered for 3 runs there. With 3 balls remaining. Nasir on strike. The man of the moment. Man on song. All gone wrong for the bowlers in today's game. Cracking. But there is production. There is field. Will just be one. It was again a cracking cover drive. Won't get more than a single on to 101 of 49 balls. Quickest 100 to Nasir Kumar in the tournament of just 48 balls. Fastest and the quickest. 261 for 4. Wabber Mali eyeing that mid-wicket boundary with shuffle inside the line around that off-stump area and trying to clear up the onside. The last ball of the game is coming up. The inning number 1. The last ball of the inning number 1 is coming up. Here is Rajat, and Nasir hits it onto the onside. Call is for 2. There is a little fumble. Will he complete the second run? He's home, no problem there. And they close on. They finish on 264. 265 to chase. And talking about the total, Hillview need Mount Everest to climb. We shall be back after the commercial break. Join us for the chase. Till then, Assalamu alaikum and fi amanillah.
Assalamu alaikum. And out come the two openers. Time for chase in the middle. They require 265 to prevail and to become the second semi-finalist team of the tournament here at Red Premier League Season 2. You can see the two openers. They stroll out, they stride out to the middle to make those 265. And it's going to be an uphill task. Herculean one with the bat won't be easy. They need to find something special straight away. Ruffle their feathers, sweat it out, bat up the skins. Not going to be easy at all. Nag is getting ready. He's preparing himself for that task he's got right at the moment on his hand. He's going to open the attack. He's going to start the proceedings with the ball. The two openers finally in the middle. They're going with I think both the batters are lefties. They're going with the lefty pair up front here. Looking at the batters, the way they are displaying and shadow practicing at the moment, are warming up a bit. Royal Goodwill set 265. Mammoth. Mount Everest to climb. It is a hefty score, a huge score. Won't be easy to chase down. Two openers in the middle. Finally, it's game time and the chase time in the middle. As Naga is getting ready. Little pep talk, discussion time in the middle. That means the score they have on the board looks like that they're going to be hot favorites, but you can't say anything until the last ball is non-ball, because cricket is the game of uncertainties, or the glorious uncertainties. It can change its colors. What we have seen, things can change, but 265 looks like a tough one. An uphill, tough ask to chase this evening here, this afternoon. And it's going to continue till late afternoon, and we can say early evenings. It's going to be knocked open the attack. Openers waiting for umpire to make that call of let's play. Here we are. Rajesh is about to throw it out. Let's play. Is he going to throw it out? He is in readiness. All set for the chase in the middle. As we watch, opener is waiting for something. There is something going on. The TV umpire was out on the field. Now he's walking off. OS Ahmed having some issues there. He's okay, he's fine now. He's within the 30-yard over there. Ball number 1 is about to come. Knocked ball from Northern Pavilion end. On strike is going to be the left hand. Umpire Rajesh says it's time for the countdown. Countdown begins. It's 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And it's let's play in the middle. Here we are. Here we go. Ball number 1 of the chase. He's got a slip in place of the inside edge, and they're going to pinch a single. Anuj Kumar is underway, and up the mark. Suryan Shirana is the opener. It's 1 without loss in over number 1. Required rate is straight away 13.31 and over. स्वागत आप सभी का दूसरी पारी में 265 एक विशाल जनक स्कोर चेज करना है हिलव्यू राजौरी को. सूर्यांश रैना, अनुज कुमार शुरुआत कर चुके हैं. पहला रन आ चुका है हिलव्यू राजौरी के खाते में. नाग ने शुरुआत की है गेंदबाजी में. आज ताबड़तोड़ तेज तरार शतक ये पारी, और ऐसे में एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं. एक चुनौती जरूर रहेगी यहाँ पर हिलव्यू राजौरी को. एक सिंगल मिलता ऑफ साइड में खेल करके दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्यांश रैना, अनुज कुमार. फिर एक ठोस तेज तरार विस्फोटक शुरुआत चाहिए, क्योंकि सामने रिक्वायर्ड रन रेट 13.37 का 2 बगैर नुकसान के. इस बार गेंद हालांकि थोड़ी सी फुल की जरूर थी, पर एक रन जरूर दौड़ करके पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने. सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना जरूरी, पर यह पहले 6 ओवर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको 265 तक पहुंचना है, और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 13.44 का है. तो ये चीज माइंड में जरूर रहनी चाहिए दोनों बल्लेबाजों के. नाग इस ओवर में अगली बार, इस बार अच्छा स्ट्रोक, यहां रन जरूर मिलेंगे. गेंद सीमा रेखा से बाहर. 6 का इशारा अंपायर का. यह पहला छक्का इस मैच में. इस छक्के के साथ हिलव्यू राजौरी 8 तक पहुंच चुकी है नाग के विरुद्ध.
बड़ा प्रहार हर यहाँ 6 मिलते हुए, जी हाँ, बॉर्डर लाइन से बाहर जाकर के गेंद ने टप्पा खाया था और 6 मिले यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को, अनुज और सूर्यांश रैना। हिलव्यू राजौरी की ओर से जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग दूसरा एडिशन, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और जिक्र करें इस रेड प्रीमियर लीग की तो एक टीम अथवा इंडिया 11 सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, यहाँ से दूसरी टीम आएगी और देखना होगा हिलव्यू राजौरी क्या इस सम्मानजनक बल्लेबाजी के चलते इस विशाल जनिक लक्ष्य तक पहुंच पाएगी, देखना होगा। और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हुए नाग उतना ज्यादा गति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। गर्ग के पास गेंद पहुंची, फील्ड हुई, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 9 बगैर नुकसान के पहला ओवर। अंतिम गेंद का आना बाकी। इश्तियाक रसूल आखिरी गेंद लेकर के, एक सिंगल मिल जाएगा इस गेंद पर, 1 रन और खाते में पहले ओवर की समाप्ति। आकिब मीर ने गेंद को फील्ड कर लिया और इस प्रकार से पहला ओवर समाप्त 265 के जवाब में 10 बगैर नुकसान के हिलव्यू राजौरी। What a transformation from bowler, from pacer to spinner. It was pace to start, and then all of a sudden he changed his mood and decided to go with the spin art. At the fag end in the very first over, they are 10 for none. The required rate is climbing. It's 13.42 and over. They're going 10 and over. 265 is what they're looking for to join Athwas India 11 in the semi-finals. They're already there. They prevailed yesterday by just 4 runs in the end. We have another quarter-final coming up this evening. We have two big teams up against each other. It's Soport Stallions taking on United Imports. That promises to be another humdinger of a contest. One heck of a contest. 10 for none after the completion of over number 1. Nag changed his mood all of a sudden in the very first over, gone with pace up front, then changed his mood and decided to become a spinner at the fag, and the ball number 5 and the number 6, where we saw kind of the typical or the conventional off spinner operating with the ball. It's 10 without loss. Second over is about start. Roof Bashir is going to bowl the Chadura Express, who bowled really well. Impressive lines in the tournament. He's got the ball in his hand. Starts with a down the leg side delivery. That's heaved into the day sky, and that's gone miles away for a maximum. Second over, first ball, wavered one, far too down leg, and somehow he gets bat on to that. Take a look again. You will see, and this is going to confirm. Look. And this is optimistic for you guys. Now the replays confirmed it, clearly depicting that what was that. It was far too down the leg side. A wide one, but he thrown his bat at it. One-handed. Suryan Sharana gets 6 for that. 16 for none. Roof second time again in the... Oh, but that one, it's a nasty one. It's caught in slip cotton. It's given out. It's wicket number 1 down. And Suryan Sharana is gone. Banged in short this time. Nasty delivery from Roof Bashir. And once again he was trying to hook it away. This time not. It's Roof says, it's my delivery. It's my job to contain and control you. And look at that. He lost the way. Look, oh, that was an easy one. He takes a body blow and on way it kissed those gloves, brushing the gloves, and it brushed the glove. And Asim Manzoor makes no mistake. Look at their side. They're in a hurdle as they got rid of Suryan Sharana in the very second over. Roof has picked up one more wicket. And if we talk of those bowlers, or the top wicket takers in the tournament, the first one is Yash Garg. The second one is, I think, Roof Bashir. Now he's also in that race of, can he meet that mark of 17? Will he get there somewhere close to Yash Garg? They're playing for the SAM team in the tournament. Yash has 17. Roof, earlier on, he were having 12, I think, to his credit. And this is going to be the 13th one for Roof in the tournament. The 13th scallop. And it was Suryansh who gone into his kitty. The wicket tumbling straight away. One more plung. And it's the first one to go this afternoon here at this beautiful and iconic Bakshi Stadium. It has its own historic value and worth. The background it carries. 16 for 1 as we are in over number 2. This is JK Super Cement Red Premier League presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. And I got Sheikh Nazir in the com box. Very confident. Your words.
अनुज कुमार 2 पे हैं और सूर्यांश रैना को चलता किया वहां पर बशीर ने, आसिफ मंजूर ने स्लिप कॉर्नर्स में एक अच्छा कैच पकड़ा। 16 पे 1.2 के बाद उमर लेफ्टी अब नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए। पर यहाँ प्रहार जरूरी है, यहाँ विस्फोट जरूरी है, यहाँ आक्रमण जरूरी है। आते ही बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हालांकि गवर लेग की उस ओर तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया पर सिंगल लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को, ये देखना होगा। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी पे विकेट, तीसरी पे सिंगल। 17 पे 1.3, 13.41 रिक्वायर्ड रेट, वो विशाल जनक लक्ष्य 265 जीत के लिए और सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए हिलव्यू राजौरी को। कुमार 2 पे 2 गेंदों से उमर लेफ्टी ने 1 रन बनाया है, इस बार उड़ाया खूबसूरती के साथ। पर पीछे फील्डर, एक समय में ऐसा लगा 6 मिल जाएंगे पर नहीं, या विकेट मिल जाएगा। ये दूसरा विकेट गवाया है 17 पे और रूप बशीर को अपने पहले ही ओवर में ये दूसरा विकेट मिलता हुआ। हालांकि एक समय में ऐसा लगा कि काफी दूर जाएगी ये गेंद, हवा में जरूर थी पर दूरी नहीं दे पाए और एक और विकेट का पतन होता हुआ ये दूसरा विकेट हिलव्यू राजौरी ने गवाया है। 16 पे पहला, 17 पे दूसरा, कुमार ने पकड़ा ये कैच और हिलव्यू राजौरी अपना दूसरा विकेट गवा चुके हैं। कमाल की गेंदबाजी, और आज रूप बशीर को अपने और दूसरे ओवर में उन्हें गेंदबाजी के लिए लेकर के आए कप्तान। ये देखते हैं कि 8-9 ओवर के बाद गेंदबाजी किया करते थे पर आज उनका परिवर्तन किया गया और ऐसे में 17 पे 2 विकेट गंवाया रूप बशीर को। इस ओवर में 7 रन खर्चने पड़े पर 2 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट। उमर लेफ्टी बीच मैदान में, पर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अनुज कुमार और सूर्यांश रैना वापस लौट चुके हैं। It's a bad start to me. And one you would love to forget it. It's as they're 2 down, they're chasing a Mammoth 265. And I would like to thank our beloved listeners. One of them is Muntazidar Ganga from Gandrabal Kangan. The other one is Amir Bashir from Nusubandipura. Thank you very much, all the beloved listeners and viewers. Well, Nazir, you know that it is their love. It's their love for the game of cricket. They're always there to back us. Thank you, Amir and Muntazir. Back to the game. It's 2 for 17 on the board at the moment. Both openers sent packing, and Roof has 2 straight away in today's game. And what a day and what an afternoon he's having in the middle. As he has removed 2 of the batters, that brings newcomer in at number 4. Royals enjoying their royalty and the royal ride. And they are on top here, calling the shot. And what can Hillview do? They can only watch from that hill, from the top of the hill, how Royal Goodwill is keeping them away from the game. They're just as viewers at the moment and mute spectators. And on the other side here at this flat, beautiful ground, it's Royal Goodwill on top. Faizan Butt comes out in at number 4. What can Faizan do? Oh, interesting. First right-hander walks in. We saw 3 left-handers straight away. 2 were openers. Umar lefty. Now it's down to Faizan, but the first right-hander this afternoon out in the middle. Roof is got a slip for the newcomer. Oh, look at that one! And somehow he gets there. He was watchful, keeps the ball away. It was going on to hit the stumps there. It was rolling on that one. Look at that one again. How somehow he came to know something is going to happen and he keeps it away. And sometimes a ball does roll past and go on to hit the stumps. But this time not. He was there to keep it away, Faizan. But 17 for 2. Early dent. Roof troubling. Oh, look at that one. Bangered in short again. Inside the line trying to pull it. Is beaten by that extra bounce. And Roof is getting the ball to climb. And has picked up already 2. His other trios are going to be crucial here. And that's going to be the daunting task. Typical one, or the tough one to face. And this is the tough phase for the batting unit. They need to find a way to adjust here. Cement their position. Can they? Will they set the tone? Are we in for something special from Hillview? They need to find a way
to settle themselves in this game. But looking at the scoreboard, that looks like a tough one. Can't say impossible, but can say that it is going to be a tough one and a tight one. Difficult phase continues, or the dark chant looming on their dugout at the moment. They're feeling the heat. Nag, the man who batted extremely well, scoring runs. He was throwing bat at everything. Goes again. Look at that one. Wasn't that far. And he keeps it away somehow to short. Fine. We'll pick up a one. Two for 17. 18 into the third over. First ball yielded a single. Now he's going to bowl as a spinner. Conventional one. No more pace. And he knows that anything pace, it isn't easy to control the bat flow. And let's try it with a spin down the leg side. Called as a wide. Another important run added to the tally. One more added. And with that, there is addition to the tally. It's 19 for 2. 19 पे 2. तीसरा ओवर नाग एक बार फिर लेग स्टंप की शेद में और वहां पैड पे टकराई उंगली आसमान की तरफ और एक और विकेट का पतन. ये तीसरा विकेट गवाया यहां पर हिलव्यू राजौरी ने. 19 पे 3. निराश चेहरे और निराशा साफ झलकती हुई इस बल्लेबाज के चेहरे पे. हिलव्यू राजौरी को तीसरा नुकसान उठाना पड़ा है. इश्तियाक रसूल को मिलने वाली यह सफलता LBW करार दिए गए राजेश्वर बल्ला द्वारा. ओवर लेफ्टी सुरक्षित है. 2 पे 2 के दूसरे पर तीसरा विकेट. खराब शुरुआत यहां पर हिलव्यू राजौरी की. 265 तक पहुंचना है. 19 पे 3 यहां पर गवा दिया है. तो कहीं ना कहीं एक 19 पे 3. 2.2 के बाद इश्तियाक रसूल 1.2 ओवर 12 रन 1 विकेट. और रूप बशीर ने 1 ओवर की गेंदबाजी की, उसमें 2 विकेट उनको मिले हैं. तो ये अब तक का लेखा जोखा 13.92 रिक्वायर्ड रन रेट, 8.14 का रन रेट. यह दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस. उसके बाद एक और मुकाबला, वो तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा. दिन रात्रि के उस मुकाबले में सोपोर स्टैलियंस का मुकाबला यूनाइटेड इंपोर्ट्स के साथ. एक बेहतरीन कांटे की टक्कर अवश्य देखने को मिलेगी. फिलहाल ये दूसरी पारी पर 3 विकेट गंवाए हैं रोहन कोल नए बल्लेबाज. और इन 2 बल्लेबाजों पर दायित्व है न सिर्फ विकेट को सुरक्षित रखना बल्कि रन गति को भी बढ़ाना, क्योंकि आस्किंग रेट इस समय 13.92 14 के आसपास पहुंच चुका है. तो आसान है नहीं यहां से, पर क्या कोई चमत्कार कर पाएंगे. इस बार उड़ाया खूबसूरती के साथ. एक चिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर. 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ रोहन कोल ने आते ही स्वागत किया इश्तियाक रसूल का इस चौके से. 4 और खाते में जस्ट बुखारा चौका. और इस चौके के साथ रन संख्या में वृद्धि. रन संख्या पहुंच गई अब 23 पे. संभवतः 23 रन 3 विकेट पे. तीसरा ओवर पर यहां एक अच्छी पार्टनरशिप, बेहतर बल्लेबाजी करनी हो गई. रोहन कोल और उनके साथ उमर लेफ्टी को एक नजदीकी स्लिप. आसिफ मंजूर वहां पर तैनात. इस बार ऑन साइड में एक बार फिर गेंद जाएगी सीमा रेखा की ओर पर. पीछे फील्डर लेगी. उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया. थ्रो किया पर रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज. एक और खाते में 24. सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना जरूरी, पर बड़े स्ट्रोक यहां से आवश्यक, क्योंकि पावर प्ले में उस फील्ड रिस्ट्रिक्शन का लाभ लेना जरूरी है. उमर लेफ्टी और रोहन कोल को. लेफ्टी सामने बैकवर्ड पर जाकर के स्ट्रोक खेला जरूर, पर सीधे बॉलर की दिशा में अपने फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया. नाक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. गति का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं. एक स्पिन गेंदबाज की हैसियत से आज इस मुकाबले में उन्होंने गेंदबाजी की है, पर यहां चौका मिल जाएगा एक बार फिर उमर लेफ्टी द्वारा. यह अच्छा स्ट्रोक. 4 और खाते में नाग के विरुद्ध. रन संख्या में वृद्धि होती हुई 28. 3 विकेट पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद पढ़ लिया था वहां पर उमर लेफ्टी ने खूबसूरती के साथ. ये चौका बटोर लिया अपने टीम के लिए. 3 समाप्त. 264 के जवाब में 28 पे 3. हिलव्यू राजौरी. Yashgag is warming up. The highest wicket taker of the tournament, 17. He's on top of the leaderboard. He owns that purple cap. The owner of purple cap is right there.
and he deserved that cap. This is the man who worked as a shipwrecker in the tournament, as a bowler, as a potent weapon of Team Royal Goodwill. In the first game he picked up 6, in the second game he picked up 6, and then in the third he picked up 2, in the fourth one he picked up 3, making it 17 out of 4 games. 6, 6, 2 and 3. 17 out of 4 matches. How many in today's one? Will he be able to pick one? Here is Yash Garg for the first time. He's just warming up a bit. He has decided. We're just trying to measure that run up. Measuring and how I have to operate here at the Sunday. 3 for 28. Hillview or under the pump. Man in slip cordon, aerially goes. Ajishwan runs down to third man for 4. He throws his bat at it. Yashwan is someone in that portion of behind skid on the offs. He want one more in that portion, in that area, to protect and work as a cover up to keep things tight for Rohan Cole. It was a width on off, a flighted one, and Yash is going to attack straight away. Nasib Manzoor is asked to stay there. Once again, a good one. Could be tight, but that's a good running between the wickets. Yash Garg. He's in his first and overall over number 4 we are in. Yash would have wanted to start the innings, as he has been pick up the balls with the new ball. He is so difficult and a tough one to face. There is a man in slip cordon now. Slip headed. Oasis is in slip cordon. Yash, or good delivery again. On drive comes into play. A single is all he's going to get. Yash has got the ball in his hand in his very first over. 5 runs, 6 runs coming. This is good cricket from Rohan and Umar left at the moment. Need to carry on and continue. That is the important thing. That matters the most. Crouch low, guided nicely. And what a stop from OS. What could have been a boundary. And it is a dot delivery. This is going to boost the confidence of Yash. That is going to give him extra bit of confidence. And with that single, one more run added. Bit by bit, brick by brick, step by step, applying good amount of pressure on the field batting unit. They removed 3 of them earlier on. Yash to finish his first over here. Last ball of his over coming up. And he keeps it away. Over done. It's 4 gone. 3 for 35 after 4 overs. Yash finally given the ball. सात रन खर्चे गर्ग ने अपने पहले ओवर में। यश गर्ग ने 35 पे 3 4 ओवर में, और मनोवर एक बड़ा विशाल जनक लक्ष्य है, और यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। और तलाशना होगा ये लक्ष्य, तो फिर आपको बड़े और आक्रामक शैली से बल्लेबाजी करनी जरूरी है। 35 पे 3 4 ओवर की समाप्ति। और मैं जिक्र कर रहा हूं कि यहां तक पहुंचना आसान नहीं है, और निश्चित तौर पे ये सभी कारण है दोनों चीजों का। अगर हम बात करें गेंदबाजी और बल्लेबाजी की, तो इसमें बल्ले को हिलाना जरूरी है, और जब आप आक्रमण करेंगे तो फिर जाकर के कहीं ना कहीं ये बात बनने वाला। नहीं तो 265 आसान लक्ष्य नहीं है। चलिए, रोहन कॉल 11 पे, उमर लेफ्टी 7 पे, 35 पे 3 4 समाप्त हो चुके हैं। 5वें की शुरुआत। एक बार फिर इश्तियाक रसूल लगातार तीसरे ओवर में 21 रन खर्चे, 1 विकेट मिला है ऑन साइड में। यहां रन मिल जाएंगे, चौका मिल जाएगा 4 ओवर खाते में। हिलव्यू राजौरी 39 पे 3। ये प्रहार चाहिए हर ओवर में 1-2। 3 विकेट आप गंवा चुके हैं। दबाव जरूर बल्लेबाजों पर रोहन कोल और उमर लेफ्टी में क्षमता है यहाँ पे अटैक करना होगा। एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी जरूरी है, क्योंकि सिंगल डबल से तो आप इस लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हर ओवर में आपको 10-10 12-12 रन जोड़ने जरूरी है। 1-2 बड़े ओवर तलाशने। 39 पे 3 4.2
Scorer statistician Jahangir John. Third umpire Shaukat Bedi. On-field umpire राजेश्वर बल्ला और रवि कुमार चौरसिया. 39 पे 3. कोल सामने 15 पे. आसिफ मंजूर वाहिद तेली. कुछ मंत्रणा कुछ बातचीत. हालांकि आकाश को बादलों ने पूरी तरह से घेर लिया है. हल्की हवाएं चल रही हैं पर वर्षा की अभी कोई संभावना नहीं. क्या प्रभावित ये मुकाबला या अगला जो तीसरा क्वार्टर फाइनल है वो वर्षा से प्रभावित होगा, ये देखने वाली बात. पर इस समय 39. कोशिश जरूर होगी हिलव्यू राजौरी की एक बड़ी साझेदारी निभाई जाए यहां से. उमर लेफ्टी, रोहन गोल, साथ में जहांगीर लोन. कुछ वार्तालाप कुछ बातचीत. शांत धीमा क्रिकेट. ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 वर्ष दूसरा एडिशन. प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस. वो कॉन्फिडेंस दिखा आज बल्लेबाजी में नासिर कुमार, इश्तियाक रसूल द्वारा. और जहांगीर लोन ने भी अच्छी एक छोटी पारी जरूर खेली 28 रनों के, पर ताबड़तोड़. और आकिब मीर ने भी उनका सहयोग किया. अंत में वैभव माली ने भी कुछ बेहतरीन प्रदर्शन किया. तो कुल मिलाकर सभी खिलाड़ियों का एक योगदान रहा उस पिछली पारी में, अगर हम बात करें बल्लेबाजी की. कोल 15 पे. यश गर्ग ने 1 ओवर की अब तक गेंदबाजी की है. एक रूप बशीर ने और तीसरा ओवर इश्तियाक रसूल का 25 रन देकर के 1 विकेट. 2.2 ओवर की गेंदबाजी में पिछली गेंद पर चौका आया. और अब जाकर के तैयार अगली गेंद का सामना करने कोल. इश्तियाक रसूल कोल के सामने करेंगे गेंदबाजी, पर यहां बड़े प्रहार जरूरी. कुछ विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना जरूरी. फील्डर लेगी तैनात हैं, पर सिंगल मिल जाएगा. एक और खाते में. चालीस पे 3. अच्छा, बिल्कुल उसी प्रकार का कार्य करते हैं जो उन्हें योगदान और दायित्व दिया जाता था वहां पर उस क्षेत्र में, उसको बखूबी निभाते थे. खौफ और दहशत का माहौल रहता था फील्ड पे. रॉयल गुडविल की आज की अगर हम बात करें, इस बार डाउन द ट्रैक निकले उमर लेफ्टी. सामने खेला खूबसूरती के साथ, बाउंड्री लाइन से बाहर. 6 का निर्णय आता हुआ. एक और छक्का. 46 पे 3. 4.4 ओवर की गेंदबाजी. हिलव्यू राजौरी. प्रयास जरूर यहाँ पे बल्लेबाजों को, और इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है क्योंकि एक छोर से रिस्क उठाने जरूरी है. अतिरिक्त जोखिम थोड़ा लेना होगा यहाँ पर, क्योंकि 265 तक पहुंचना है तो फिर आपको सिंगल डबल से काम चलने वाला है नहीं. एक बार फिर स्ट्रोक था, टाइम नहीं कर पाए, हवा में गई गेंद. पीछे मिड ऑफ के खिलाड़ी तैनात थे. यश गर्ग ने कैच लपक लिया. उमर लेफ्टी की पारी हो गई समाप्त. 13 बनाए 8 गेंदों से. 46 पे चौथा विकेट गंवाया है हिल व्यू राजौरी ने. Yes, takes that one with ease. It's wicket number 4 down. Good catch in the end. Easy one, easy peasy. Easiest of the chances. Easy chance and is taken. 4 for 46. That brings newcomer in at number 6. In a hurdle, in a kind of a hurdle, Royal Goodwill. Yash Garg has picked up 17. Roof, the second best with 14. Sahil Shafee has 9 wickets to his credit. And the stats can change, and we shall come up with the fresh details later on. Our scorer will surely help us. We'll update the stats, otherwise it's hard. We need to find it using our own experience. We are cricket heroes and we have to collect the detail and data. It would have been better if score and statistician will update that, makes it crystal clear and makes it more informative. 4 for 46 in over number 5. The last ball of 5th over is going to come. Rahan Cole is still there and he's got Puneet, the new man. He joins Rahan Cole in the middle. They require 265 to win. Puneet Kumar. He will face the likes of Nag. Nag has picked up second wicket. He's gone for 32 of his 2.5. Having some fun.
with Puneet. As Puneet is gone on a very first ball. Golden duck. And look at the celebration from Nag there. Puneet Kumar is going back to hut. This is nothing short. Look at that. Misread it completely. Gone without scoring. Golden duck. Look how energetic he was and he were. Powerful lad, but he's beaten completely. A kind of a deep slumber. And he's gonna go back to the dugout to rest. Look like a strong lad. He will do something special with the bat and is denied by beauty of a delivery. It's third one for Nag this evening, this afternoon. It's 3 overs, 3 for 32. 5 down, 46 on the board. Under the pump. Real hammering with bat now. The ball is keeping the bats away and the batters are kept calm. There is a silence. The bat is silenced with some quality lines and lengths. 46 on the board with 5 wickets down. Ankush joins Rohan Cole in the middle. Yash Garg to continue. Yash in search of one here. To keep his dominance going and alive. Will he continue that dominance in today's game? He has been dominant, played that predominant cricketer throughout the tournament. The one man who was unplayable throughout the league stage. Into the quarterfinals, it's the knockout stage. A win here will mean Royals are into the semi-finals of the tournament. They're the defending champions. That one it's through. Into the extra cover boundary for 4. And that's gone in the gap. It's hard to stop the ball. Whenever it's in the gap, you can't cut it off. That too in the power play, it's hard. That's a quality shot. Rohan Cole times that one to perfection. Beautiful shot there. Gets 4 for that. Full marks on that. Yash Garg will need to change his line and length here a bit. He has to make that adjustment. Is he going to mend his line is here? What will he do now with the ball? What's coming? And what's cooking? Let's find out. As it's 50 up for Hillview Rajouri Cricket Club after 5.1. They're 50 for 5. Yes, changing his ends, switching ends. It's a dot ball. Looking different yesterday. There isn't that much drift and turn up the surface. The way he used to produce, it looked like that. In other games, it was looking like that silvery surface when Yash used it to ball used it to drift and turn. Sometimes it used it to skid away. And there was extra bounce the other. I think that was adding to the miseries of batter. Thank you, Mansoor Aziz. Thank you very much, brother. He's not here today in the com box, but he's the interim chairman. It's 51 for the loss of 5 after 5.3. May I remind you once again, this is JK Super Seaman, a rare Premier League Season 2. It's the quarterfinal number 2, presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. We have the attendance on that portion. The adjacent one. And there we have the amenity block 3, amenity block 4. There is a good attendance. The local crowd is here. And we have some of the spectators on that portion where Royal Goodwill has got their dugout. And right behind that dugout, there is a huge crowd. They're backing this club. 51 for 5. That's Ariel. That's Apish. Where is this one going? It's on to the rooftop for a maximum. High and handsome. Ankush Bandral. And he sends it packing. Yash Garg is bit off color today. It was in the zone and he
comes up with a lusty blow. A good shot. Much needed 157 on the board. He's gone for 18 off his 1.5. And he looks all of a sudden conventional one. But other days he was ruling the roast here. He was on top. And with that, power play comes to an end. They are 57 for 5 after 6 overs. And yes, he's still wicketless. An economy of 9 in today's game. And today he's on the receiving end. 2 overs, none for 18. Economy of 9. Hillview of 5 down. They are 208 runs behind from remaining 14 overs. 57 पे 5-6 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और आधी टीम पवेलियन लौट चुके हैं हिलव्यू राजौरी की। इश्तियाक रसूल 3 ओवर 32 रन 3 विकेट। अंतिम ओवर अपने कोटे का 7वां ओवर पारी का हिलव्यू राजौरी के लिए। बल्ले से वो तेज तरार अर्धशतक की पारी। अच्छा प्रदर्शन रहा आज ओवरऑल इश्तियाक रसूल का, चाहे वो बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो। पहली गेंद इस बार फ्लाइट देने का प्रयास, ऑन साइड में गेंद को खेला, हालांकि गेंद जा रही है सीमा रेखा के पीछे गवर लेगी। इस क्षेत्र को काफी ज्यादा बिजी रखा है बल्लेबाजों ने। 1 रन और खाते में 57 से बढ़कर 58, 5 विकेट पे 7वें ओवर में अंकुश बंद्राल और रोहन कोल ये जोड़ी बीच मैदान में। कोल ने 22 है बनाया अभी तक 13 गेंदों से और अंकुश बंद्राल ने 6 3 गेंदों से। 58 पे 5, 7वां ओवर। नाग गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है। 7वां ओवर प्रारंभ हो चुका है। सिंगल मिल जाएगा अंकुश और रोहन कोल को। हिलव्यू राजौरी 265 चेज कर रही है। 264 बने थे पिछली पारी में। एक विशालजनक स्कोर, एक पहाड़ जैसा लक्ष्य यहाँ सामने खूबसूरती के साथ और गेंद सीधे बॉर्डर लाइन से बाहर। 4 रनों का निर्णय आता हुआ। एक और चौका, 4 और खाते में जस्ट बुखारा और इस चौके की सहायता के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई। इश्तियाक रसूल के विरुद्ध आपको प्रहार करने होंगे यहाँ पे। थोड़ा सा रिस्क जरूरी, कोशिश में भी है दोनों बल्लेबाज की कुछ बेहतर आक्रमण कर सके। इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक पर क्या यहाँ पर खिलाड़ी, जी हाँ नासिर कुमार के पास। रोहन कोल की पारी समाप्त। 26 बनाए 15 गेंदों का सामना किया और 63 पे 6ठा विकेट गंवाया है हिलव्यू राजौरी ने और नाग को मिल गई चौथी सफलता 50 बल्ले से और यहां ये चौथी विकेट। पूरी तरह से संतुलित होकर के स्ट्रोक मारना चाहते हो। ऊंचाई ज्यादा थी, दूरी नहीं दे पाए। नासिर कुमार ने उस क्षेत्र में एक कैच जरूर पकड़ा था और ये दूसरा कैच उस क्षेत्र में उन्होंने पकड़ा है और इस प्रकार से 6ठा विकेट। उत्साहवर्धित चेहरे, मुस्कान चेहरों पर क्यों न हो, क्योंकि धीरे धीरे से जीत की ओर अग्रसर रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब दूसरी टीम होगी यहां से जीत करने वाली जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। रोहन कोल, कट नासिर बशीर, बोल्ड इश्तियाक रसूल। 26 बनाए 15 गेंदों से 63 पे 6, 6.4 के बाद बंद्राल 7 पे और गेंदबाजी विश्लेषण 3.4 ओवर 38 रन और 4 विकेट। इस ओवर में 6 रन खर्चे हैं। और अब आए हैं मुनीब मनाफ, जिनका चयन हुआ इस टीम में आज इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए और देखना होगा वो किस प्रकार से अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, किस प्रकार की पारी, क्या यहाँ कुछ बेहतर पारी खेल पाएंगे अपनी टीम के लिए। क्योंकि चुनौतियां हैं, मुश्किल रास्ते, कठिन परिस्थितियां हैं, कठोर रास्तों से गुजरना है तो आसान रहने वाला नहीं है। 15.15 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं यहाँ से टीम हिलव्यू राजौरी को। जी के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग presented by Athwas Retail, Athwas with Confidence, JK Sports Time, official Facebook, YouTube, Project Shining Star, Pampore, MHM Fashion Pista, Anthem Sports India, Just Bukhara, Hamdan Hurricanes, Dulgate Sports Club, HND और Valley Fresh Cold Chain Cricket Club. Thank you sponsors, जितने भी हमारे दोस्त, हमारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं स्पोर्ट्स ऑफिशियल पेज JK Sports Time YouTube के साथ, और उनसे निवेदन होगा YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले हर मुकाबले का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और उसके अलावा प्ले स्टोर पर जाकर के भी JK स्पोर्ट्स टाइम ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध। 7 ओवर समाप्त और 7 ओवर में हिलव्यू राजौरी ने 264 के जवाब में 64 बनाए हैं। 6 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर 78 गेंदे, 201 रन और चाहिए, 4 विकेट सुरक्षित। What a performance
South Kashmir sensation Nag, 50 with bat, 4 wickets with ball, gone for 39. Conceded runs at the rate of 13 and over. I think less than that. It's 4 overs for 39. It should have been 3 overs. Then it was 13 and over. Well, he's gone for plenty and shade below 10 and over in today's game. As you can see, 39 off his 4, but 4 important and crucial wickets. And that has given them something that is keeping batters under check. And it tightened at the nose of batters, tightening screws, clueless batters, and making mistakes time and again, committing mistakes. It's because of that terrific lines and lengths straight away. And first on, earlier on, they put on a show with the bat, scoring 264. And it was evident that scoreboard pressure will remain there. It will be largely looming on their heads. Now they're 6 down with just 64 on the board. Decided to take him on. It isn't easy. It's going to be hard to find that fence against the likes of Yash Garg. And Yash will try to do something special. He's going to come up with a different plan. Now he has to look for other plan here. The next one right behind. Blocks it. Still in search of a breakthrough. Other days it was complete blossom and bloom for the bowler. Today it's a kind of drought. Will he end his drought in today's game? It's autumn for bowler at the moment. The one who's the top wicket taker of the tournament. And that one, it flies. It goes the distance for a maximum. Miles away. Sent packing. What a hit. And Ankush Bandral. No more breaks on. He breaks free and hits it through the line. Aerial, he goes for a maximum. Much needed. 71. Now they need below 200 for the first time in today's game. Yash Garg 2.5. None for 25. Wide of the off. Gonna be wide. Yash used to open the attack with Nag. Today he was brought later on. Bit late with the ball. And looks off colour. This time goes again. Aerial he goes. And goes flat for a maximum again. 6 number 2 of the over. And Yash will finish his 3rd over with a 6. And that 6 takes Hillview to 77. And Ankush, the lone man, is fighting it out. Look. Ankush, he has decided to step up to the occasion. He's trying to stay his ground there. And that's what I reckon. And I'm feeling that at the moment. The way he's batting. He's look good. He's look confident. 19 of 6 balls. Yash gone for 32 of his 3 overs. यश घर को आज सतर्क रहना जरूरी. 3 में 32 उन्होंने खर्चे हैं. विकेट उन्हें मिला नहीं है. कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाया और उनके विरुद्ध ज्यादा अटैक किया है अंकुश बंद्राल ने. मुनीर मनाफ ने मात्र 2 रन बनाया है. 6 गेंदें खेली हैं. वहीं पे 6 गेंदों से 19 बना करके नाबाद हैं अंकुश बंद्राल. 8 ओवर समाप्त. 78 6 विकेट पे. नासिर बशीर को थमा दी है गेंद. हालांकि आमतौर पर बहुत कम दिखाई दिए हैं गेंदबाजी करते, पर आज उन्हें गेंदबाजी के मोर्चे पर. शायद उसका कारण यह भी है कि 6 विकेट गंवा चुकी है. आधी से भी ज्यादा टीम पवेलियन लौट चुकी है हिलव्यू राजौरी की. और एक अभ्यास के तौर पर गेंदबाजी थमा दी नासिर कुमार को, क्योंकि बहुत कम अवसर पर देखा गया है गेंदबाजी करते हुए. 79 पे 6 9वें ओवर में नासिर बशीर ये दूसरे खिलाड़ी बने आज जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2nd एडिशन के, जिन्होंने शतक पूरा किया. साहिल शफी 106 और 102 अथवा 103 रन बना करके नाबाद रहे. और दूसरे खिलाड़ी बने इस टूर्नामेंट में रॉयल गुडविल की ओर से, जिन्होंने ये शतक पूरा किया. और इससे पूर्व साहिल शफी यूनाइटेड इंपोर्ट्स श्रीनगर के खिलाड़ी ने शतक पूरा किया था. यहाँ कुछ रन जरूर. 1 रन और खाते में 80. 6 विकेट के नुकसान पे 8.2 ओवर की गेंदबाजी. सामने मुनीर मनाफ 3 पे. नासिर बशीर एक स्लिप के सारे गेंदबाजी करे. धीमी गति की गेंद मिड स्टंप पे हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में उसको प्लेस किया. दौड़ पड़े चहलकदमी करते दोनों बल्लेबाज एक सिंगल के लिए. 1 रन और. यहाँ आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा. 16 तक पहुंच चुका है रिक्वायर्ड रन रेट. ये आसान नहीं है क्योंकि विकेट भी आपके पास सुरक्षित नहीं है. तब कोशिश जरूर होगी एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचा जाए. बड़ा स्ट्रोक बंद्राल के बल्ले से खूबसूरती के साथ गैप में गई गेंद और सीधे
बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए एक और चौका मिलता हुआ। अंकुश बंद्राल लगातार एक छोर से विस्फोट कर रहे हैं, जानते हैं इसके सिवा उनके पास कोई उपाय है नहीं। दूसरे छोर से विकेट उन्हें गिरते हुए देखे जरूर हैं। डाउन द ट्रैक निकले, गेंद की पिच तक पहुंचे और खूबसूरती के साथ गेंद को मिड विकेट क्षेत्र बाउंड्री से बाहर भेजा। चौका मिला 4 और खाते में। रन संख्या हिलव्यू राजौरी की इस बार फेयर गैप में गई है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार ऑफ साइड में चौका मिलता हुआ कुमार के विरुद्ध। 2 चौके आए इस ओवर में और अभी भी संभवतः एक गेंद का आना बाकी। बंद्राल लगातार बेहतरीन प्रदर्शन, ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर थी गेंद, तिरछारे बल्ले के साथ दिशा दे दी और 4 रन बटोर लिया अपनी टीम के लिए। 4 और खाते में। 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई। हिलव्यू राजौरी 89 पे 6, अंतिम गेंद का आना बाकी। 28 पे नाबाद अंकुश बंद्राल, मात्र 9 गेंदों से। नासिर बशीर अब तक 11 रन खर्च कर चुके। एक और बड़ा स्ट्रोक खूबसूरती के साथ हवा में उड़ाया और सीधे एक टिप्पे के बाद संभवतः, जी हां, 4 रनों का निर्णय आता हुआ अंपायर का। एक और चौका। अंतिम 3 गेंदों से 3 चौके, हालांकि पहली 3 गेंदों से 3 सिंगल और फिर अंतिम 3 गेंदों पे 3 चौके, तो कुल मिलाकर 15 रन आए इस ओवर से नासिर बशीर के। अंकुश बंद्राल ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है, अकेले दम पे इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरे छोर से विकेट गिरते हुए उन्होंने लगातार देखे हैं। वो ताश के पत्तों की तरह पारी पे करते हुए नजर आई हिलव्यू राजौरी की। 6 विकेट उन्होंने गंवाए हैं। JK Super Cement Red Premier League Second Edition 2025 presented by अथवास with confidence। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी हिलव्यू राजौरी बनाम रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब। हालांकि हिलव्यू ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, आमंत्रित किया था रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब को। 264 बनाए, जिसमें शतक नासिर कुमार का, अर्धशतक इश्तियाक रसूल का और कुछ 2-3 बेहतरीन पारियां। 27-28 रनों की पारी जहांगीर लोन, आकिब मीर ने भी 20+ रन बनाए। उसके अलावा वैभव माली ने भी कुछ बेहतरीन प्रदर्शन किया अंत में। तो 264 बने और उसके जवाब में 9 ओवर में 93 रन। गति बहुत बढ़िया, 10.33 प्रति ओवर के हिसाब से, पर 6 विकेट गंवाए हैं। यश गर्ग अंतिम ओवर लेकर के बोल्ड कर दिया। यहां पर क्रीज छोड़कर बाहर निकले जरूर थे, पर गेंद पड़ने के बाद नीचे रहती हुई सीधे स्टंप्स पे जा टकराई। पहला विकेट यहां गर्ग को मिलता हुआ चौथे ओवर में जाकर के उनको ये पहली सफलता मिली है, पर ओवरऑल 7वां विकेट गंवाया है हिलव्यू राजौरी की टीम ने। गर्ग, और ये देख लीजिए, पूरी तरह से बीट किया मुनीब मुनाफ को, चलता किया और गर्ग को मिलने वाली ये पहली सफलता। और कुल मिलाकर 18 विकेट अब तक वो प्राप्त कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में। हालांकि अभी भी 5 गेंदों का आना बाकी उनके कोटे में। 3.1 ओवर 32 रन, 1 विकेट, 93 पे 7 हिलव्यू राजौरी। Ramdayal, experienced at Campana, is in at number 9. He walks in, he comes out to bat when there is nothing left, and he decided to walk in now. As Yash Garg is among the wickets, his first one for today. And in today's game, it's the first wicket, first scalp in the form of Munib Monaf, who was undone with a beauty. Ankush Bandral, the lone man who scored 32 of 10 balls. The one man who has shown that fight with the bat. At least given his fans something to cheer, and others just surrendered. They're here to surrender ball after ball. They're falling like pack of cards and fallen like that of leaves in autumn, or the autumn downed in the middle here at Bakshi Stadium. 7 wickets down, 93 on the board. This is over number 10 we are in. The required rate is now 15.88 and over, which is nearing in on impossible. It's getting out of control. Yesh to produce first ball against the likes of Ramdayal. Oh, look at that one. Beauty of a ball. And Ramdayal somehow blocks it, jammered that one, and gets away with that one in the end. He survives. There is a slip in for Ramdayal. There is Asif Manzoor. This time he flighted it, testing the patience of batter, and was equally to the task. He changed his mood, checked himself. He were having plans of hitting the ball. There is a long on in place. Next one, that's a good looking shot. Hits the gap, will pick up one, is off the mark. Yash Garg has got 2 balls in his quota to come
And on strike is going to be Ankush Pandral, 94 for 7. They are 171 behind. That's massive. Not just a Herculean one, not just an uphill task. Looks like impossible one awaits their side. Good looking shot. Ankush is so nice there. Confidence level is getting a kind of boost with every passing ball. The last ball of his spell. Who will win this battle? Batter or the bowler? It's a dot to end the spell. 4 overs, 1 for 33. The 18th one overall for Yash Garg. It's time for drinks in the middle. And the asking rate gone up to 17.10 and over. 10 ओवर समाप्त, 94 बने, 7 विकेट खोए, 60 गेंदें, यानी कि अगले 10 ओवर में 171, 17.10 प्रति ओवर के हिसाब से विकेट आपके पास सुरक्षित नहीं है, 3 विकेट सुरक्षित है। तो अब ये मैं समझता हूँ संभव नहीं है यहां से, क्योंकि 60 गेंदों से 171 रन बनाना 10 ओवर में इतना आसान नहीं है। महा चमत्कार चाहिए, फिर जाकर के इस कहानी में कोई ट्विस्ट आ सकता है। अन्यथा ये अब एकतरफा मुकाबला बना दिया है रॉयल गुडविल ने, जिस प्रकार से 7 विकेट 10 ओवर के भीतर ही प्राप्त कर लिए हैं। और अब देखना होगा कहां तक, क्या पूरे 20 ओवर ये टीम खेल पाएगी, ये बड़ा प्रश्न होगा। और दूसरा प्रश्न कि कहां तक पहुंच पाएंगे रामदयाल और अंकुश बंद्राल, और मात्र ऐसे खिलाड़ी वाहिद बंद्राल जिन्होंने बीच मैदान में कुछ बेहतर बल्लेबाजी की है, जो गेंदबाजी के सामने डटे जरूर है। नासिर बशीर पिछले ओवर में 15, ये उनका दूसरा ओवर है, वापस बॉलर की दिशा में खेले, फील्ड कर लिया, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। आज दूसरे खिलाड़ी बने हैं, दूसरे शतकवीर बने हैं जेके सुपर सीनियर रेड प्रीमियर लीग के नासिर कुमार। शानदार पारी रही, फ्लाइट देने का प्रयास, लॉफ्ट किया गेंद को, पीछे फील्डर हैं जावेद जड्डू, और जब तक वे गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, एक सिंगल मिलता हुआ यहां पर रामदयाल और अंकुश बंद्राल को। बंद्राल अब सामने होंगे 95 पे 7, 58 से 170, यह इक्वेशन, यह आंकड़ा 17.59 रिक्वायर्ड रन रेट इस समय। एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबला और तीसरा ओवरऑल क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा, जो इस मुकाबले के बाद खेला जाएगा। सोपोर स्टैलियंस का मुकाबला यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर के साथ। जहांगीर लोन के पास गेंद, अच्छी फील्डिंग, बेहतर फील्डिंग जहांगीर लोन द्वारा, रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और 96 पे 7। तो बात हो रही थी सोपोर स्टैलियंस की, बात करें अच्छी खासी बल्लेबाजी उनके पास है, पर उनका प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में उतना रहा नहीं है, क्योंकि पिछले 4 मुकाबलों में से उन्होंने मात्र 1 जीत अर्जित की है। और यहां हवा में उड़ाया और गेंद सीधे फील्डर के पास, जहांगीर लोन ने कैच लपक लिया। रामदयाल की पारी हो गई समाप्त, 96 पे 8वां विकेट 10.4 के बाद, 169 56 गेंदों से। तो सुपर स्टैलियन पिछले 3 मुकाबले लीग बेस्ड की अगर हम बात करें, लीग मुकाबलों की बात करें, एक ही मुकाबला जीत अर्जित की थी स्पेक्ट्रम से, वो मुकाबला जीता था। और वहीं पे यूनाइटेड इंपोर्ट्स ने सबसे 3 मुकाबले जीते हैं। And that Pool A should thank, all teams should thank, keeping this side aside. We can say that because they were the top contenders. They won all their 4 games. They were ruthless, unbeatable, and unmatchable in that league stage. But other 3 teams should thank Spectrum Kings Cricket Club. It's because of that they prevailed to the next stage. We can say literally to some extent. Yeah, they played good cricket, no doubt about that. But they didn't win a game that given others a chance to stay alive in the competition. 169 behind from 56 balls. But Royal Goodwill, what a form they're carrying in the tournament. They are unbeaten. This is their 5th one on the trot. It's going to be the 5th victory. And will they carry on? Looks like they're almost there, just 2 wickets away. Pawan Nirvani is in at number 10. And Rajat is going to come at number 11. The lone man remaining in the dugout. Nasir Kumar, centurion in today's game, the 2nd centurion, and it was the fastest and the quickest of the tournament, to his credit, and the quickest 50 of the tournament that gone to Nag in today's game. He has a century to his name and a wicket in his 2nd over. Good looking shot, but Gabal Laggy is there waiting for the ball to come in. Laggy not getting an opportunity to operate.
in this tournament. He has been there for Royal Goodwill throughout the tournament. On strike is going to be Ankush. Fly to that one. And he drives it straight through the line. There is Jadu. Look at the attendance, little attendance. All are looking calm and quiet at the moment, as it's a one-sided game, completely one-sided. First they put on 264. Now in response, Hillview could only manage 99 after 11 with 8 wickets down. In tatters. Tough competition for it's 99 for the loss of 8. They're 166 runs behind from 54 balls. Nasir Bashir Kumar 2 was 1 for 20. This is JK Super Cement Red Premier League presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. Second quarterfinal. Third one is lined up. We have two big teams. It's United Imports on one side. On the other side is going to Soports Talents. Two pack teams will fight it out this evening and late into the night to find their place in the semi-finals. Two already there. One is already there. The second one is going to join them in a while from now, as they're just 2 wickets away from sealing the deal in some style here at Bakshi Stadium. It's cloudy at the moment. Black clouds, heavy clouds. But the good thing is, no drizzle, no rain. It isn't pouring at the moment. We hope that it will stay like this till the very last ball of the match number 2 for today. And that's going to the quarterfinal number 3. Roof is back into the attack. The way he bowled in the power play, he looked threatening. He did tease the batters and picked up a couple of wickets in this very first spell, and that was tight one, deadliest one. He destroyed the top order, dismantled them, and it's where they lacked the confidence. They felt that it isn't going to be easy, and he brought a couple of wickets earlier on, putting pressure on the top order. Here he is back for the second spell. The first ball right on money. Ankush Pandral and Pawan Nirvani, the two men in the middle. Nirvani keeps it away. I think Nirvani opened the attack for his team, and he was taken for 12 in his very first over. It's where Royal started the campaign. That one wide of the off, trying to smash it, but is beaten completely. That's the beauty of a delivery. It was a kind of an invitation. He's not having slip in place, still going with that wide angle, trying to lure him into the drive. The man is at cover. The catching cover is in place. Anything aerial, anything miscue, with less power behind the shot, may go to the man who's there inside the 30-yard at the shorter position. This time trying to guide it, and it still goes past, all beaten. And these are going to be invaluable and important runs. 4 of them, 100 up for Hillview. In pursuit of 265. They are now past 100. Look at that one. He tried to close his legs. It's gone between the legs down to the fence. उपहार के रूप में यह चौका मिलता हुआ हिलव्यू राजौरी क्रिकेट क्लब को 100 के पार टीम का कुल शौक 103 पे 8 12वां ओवर 162 अभी भी चाहिए 51 के दूसरे रूप बशीर 1.3 ओवर 7 रन 2 विकेट। पहले ही ओवर में 2 विकेट उन्हें प्राप्त किए थे। सामने के लिए हवा में पुरुष फील्डर है नहीं, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ 4 और खाते में पवन निर्वाणी के खाते में यह चौका रूफ बशीर के विरुद्ध सीधे बल्ले से खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पे ये चौका मिलता हुआ 4 और 107 8 विकेट पे। विकेट ज्यादा सुरक्षित नहीं है यहाँ हिलव्यू के पास, पर अब कोशिश जरूर कर रहे हैं कि थोड़ा सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचा जाए। ये अंतर जो है हार और जीत के बीच रनों का, उसको थोड़ा कम किया जाए, वो उसी कोशिश में समय बल्लेबाजी होती हुई। इस बार ऑन साइड पे खूबसूरत स्ट्रोक
गेंद सीधे बॉर्डर लाइन से बाहर, 6 के लिए, 6 का इशारा आता हुआ, एक और छक्का, कमाल का स्ट्रोक, जस्ट बोखारा। और इस छक्के के साथ रन संख्या में वृद्धि। रूप बशीर के विरुद्ध प्रहार, एक चौका एक छक्का, और ये स्ट्रोक बेहतर था। और सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 और 113 रन संख्या इस समय हिलव्यू राजौरी की 8 विकेट पे। कमाल का स्ट्रोक था, बेहतरीन स्ट्रोक था। 6 रन सीधे अर्जित किए थे वहां पर रूप बशीर के विरुद्ध। बल्लेबाज पवन निर्वाणी ने इस बार फिर फुल किया, और एक बार फिर गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए, एक और चौका। निर्वाणी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन इस ओवर में, और चाहिए भी, क्योंकि अब आपके पास पाने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो कोशिश जरूर करनी है, यहां से हर संभव प्रयास करना है। वो किया पवन निर्वाणी ने इस ओवर में रूप बशीर के विरुद्ध। 4 रन और मिले, रन संख्या पहुंच गई है 117 पे 8, 12 ओवर समाप्त। 8 ओवर में 148 चाहिए। निर्वाणी 15, 7 गेंदों से बंदराल 35, 14 गेंदों से 18.5 चुने रिक्वायर्ड रन रेट। या अब असंभव होता चला जा रहा है यहां से, क्योंकि 8 ओवर का आ रहा बाकी। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला वर्तमान में, और तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब का टाकरा यूनाइटेड इंपोर्ट्स नगर के साथ। और यूनाइटेड इंपोर्ट्स ने पिछले 4 में से 3 संभवतः जीते हैं, और सोपोर स्टैलियंस ने 1 मुकाबला। तो कहीं ना कहीं आज इस बड़े मुकाबले में एक बेहतरीन आत्मविश्वास के साथ उतरेगी टीम सोपोर स्टैलियंस और उनके साथ यूनाइटेड इंपोर्ट्स। एक अच्छा मुकाबला आज की शाम देखने को मिलेगा। 48 गेंदें, 148 की आवश्यकता, 12 के बाद 117। Nasir to continue. Flighted that one with no pace on offer. I think this is clever cricket. Smart from Nasir Bashir Kumar. Once again, there is a pace behind the ball. He goes after that one into the fence for 4. And Ankush has that power to produce. He produces the power, generating that energy, and gets 4 for that. But that's good cricket from Nasir here. He's trying to trap him. He's got the man at long on. He's got the man at long off and long on. Once again, and this time he's lucky. He gets lucky. Ankush would have been on his way. Ball eluding stumps and goes down to the short fine leg area. That saved Ankush Bandral. Moves to 40 of 17. They are 143 behind from 45 bowlers. It's Pavan Nirvani on strike. Keeps it away, does well. Nirvani waits for the ball. That's what he believes. He can keep it away. Like that next one, he's down the track. That's a good shot. Chipped in the air. Couple of bounces. And it's into the fence for 4. Quality shot from Pavan Nirvani. The way he chipped that one in the air, and it rolled past. It was aerial and then goes off the turf. Look at that shot again. Beautiful. It's come off the bat of Nirvani. Nirvani is scoring runs now. He's looking good at the moment. They're 139 behind. Goes flat into the mid-wicket boundary for 4. Third 4 of the over. And they're 135 behind from 42 balls. 7 overs are going to come. And Nasir Bashir Kumar conceded 3 fours. Once again, there wasn't pace behind the ball. Flight was on offer. Little bounce. But he's picked up it nicely. Nirvani and Ankush Pandral in the middle. Only 2 batters. Showing that aggression, confidence, and batted really well. Which way the game will go? But this is going to be something special, and people will talk about it. At least the 2 men from Hillview shown that resilience, and they did tease the bowlers, and even at the moment they are not gonna give up. They still want to fight it out here against the likes of Roop Bashir and rest of the pack. Couple of chip shots
of the batter Pavan Nirvani. The one through wide of mid off, the one we saw in previous over. That gone for 6 against the likes of Bashir. Using his pace. 135 needed from 42 balls. It's down to 7 overs. Ankush Bandral, who scored 40 of 17. He has that belief and he believes that he can. What can he do with the bat now? Will he keep his side in the hunt? As long as he's there, he will search boundaries. He needs those runs. The one thing he can do with this is to reduce that deficit with every passing ball. Good one to start with. The bat is coming straight. Ankush is playing really well here. He's playing gem off a knock. The only man who has been in good form and has shown that his prime form, and we can call it a class act with the bat. That's full toss. There is Gabalegi. I think that's going to be runs. 4 of them. That's 4. Not a good stop in there. Not a clean stop. Take a look again. How he flicked that one round the corner. Can Pavan Nirvani and Ankush Bandral make it a tight one in the end? Can they push further? It looks like it's going to be an uphill task. But runs are coming. That's the good thing. That's the good part. This could be tight. Directed needed. And Vaitele misses the target. They're 128 runs behind. 129 behind from 39 balls. The asking rate has gone up to 19.85. Ankush and Pavan should bat till the very last ball. It hardly matters which way the game will go now. As you were early dented and you were in tatters straight away at dire straits. And their owner and the team management will be extremely happy if they bat out all the 20 overs. देखिए ज़रूरी भी है यहाँ से अब पूरे 20 ओवर खेलना, क्योंकि अभी भी 2 विकेट सुरक्षित हैं. 137 पे 8, 128 अभी भी चाहिए 38 गेंदों से. हालांकि आसान नहीं है उस लक्ष्य तक पहुंचना, पर बल्लेबाजी इन 2 बल्लेबाजों ने बेहतर की है. 27-12 गेंदों से पवन ने और अंकुश बंद्राल ने 42 रनों की पारी खेली है. 10.02 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है टीम. रूप बशीर तीसरा ओवर 27 रन 2 विकेट. और सामने वापस बॉलर की दिशा में उसूर फील्डर तैनात हैं. सिंगल मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को. रन संख्या में वृद्धि होती है और हिलव्यू राजौरी धीरे धीरे से अब प्रयास करते हुए ताकि पूरे 20 ओवर तक वो खेल पाए. क्या संभव हो पाएगा? 138 8 विकेट पे. अंतिम गेंद का आना बाकी इस ओवर में. बंद्राल सामने 42 पे. रूप बशीर इस बार खूबसूरती के साथ एक बार फेर खेला, पर एक बार फेर खिलाड़ी के पास उनको भेद नहीं पाए. अंतिम गेंद पर एक और रन. ओवर की समाप्ति 14 समाप्त. 139 पे 8. हिलव्यू राजौरी, अंकुश बंद्राल और पवन निर्वाणी ने अच्छी पार्टनरशिप निभाई है. 9वें विकेट के लिए दो बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतर और शानदार प्रदर्शन रहा है. वो जो कार्य मध्य क्रम में टॉप ऑर्डर में करना चाहिए था वो हुआ नहीं, वो दिखा नहीं, वो प्रदर्शन बल्लेबाजों का. पर यहाँ अंत में कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी. 9.93 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है. एक बार फिर नासिर कुमार के हाथ में गेंद. आज उन्हें पर्याप्त अवसर मिल गया गेंदबाजी करने का. 3 ओवर में 33 रन 1 विकेट. बल्ले से शतक. 4 विकेट नाग को मिले. यश गर्ग को भी 1 विकेट मिला. तो 3 गेंदबाजों को अभी तक सफलताएं मिली हैं. रूप बशीर को 2 विकेट. तो यह अब तक का लेखा जोखा. 14 के बाद 139. नासिर कुमार आखिरी ओवर अपने कोटे का और 15वां ओवर लेकर के तैयार रॉयल गुडविल की ओर से. सामने अंकुश बंद्राल बाएं हाथ के बल्लेबाज 43 पे. पहली गेंद पर गेंद के आने का इंतजार किया. तिरछाड़े बल्ले के साथ कट किया गेंद को. सिंगल मिल जाएगा.
एक रन और 140 और रिक्वायर्ड रन रेट अब 21.43। अब ये उनकी पहुंच से बाहर। पर निर्वाणी और अंकुश बंद्राल अब कुछ प्रहार करते हुए एंजॉय कर रहे हैं अपने बैटिंग को, बल्लेबाजी को। इस बार डाउन द ट्रैक स्टेप आउट करके बाहर निकले खूबसूरती के साथ सामने की ओर। एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए चौका और जस्ट बुखारा 4 रन और खाते में 144 पे 8। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विन कॉन्फिडेंस। और ये शॉट भी आत्मविश्वास के साथ खेला बाएं हाथ के बल्लेबाज ने। 4 और खाते में जोड़े अपने लिए और अपनी टीम के लिए। निर्वाणी पहुंच गए 32 पे, 144 पे 8 इस समय स्कोर। टीम हिलव्यू राजौरी क्रिकेट क्लब का 265 तक पहुंचना है। 144 तक पहुंच चुकी है टीम। यहां एक और सिंगल मिल जाएगा। 1 रन से संतुष्टि दोनों बल्लेबाजों की। 145 और अभी भी 120 रन और बनाने हैं। 121 रन और 1 रन और जोड़ा 145, तो 33 गेंदें 120 रनों की आवश्यकता। 6 रन आ चुके हैं 3 गेंदों से इस ओवर में नासिर बशीर के। 39 खर्चे हैं, 1 विकेट मिला है। देखिए बेहतर तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये आत्मविश्वास, ये संयम, ये धैर्य पिछले बल्लेबाजों में दिखा नहीं, जो इससे पूर्व आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। यहाँ अच्छी बल्लेबाजी की है, विकेट के स्वभाव को पढ़ते हुए अपनी क्षमता के अनुकूल उन्होंने स्ट्रोक्स भी लगाए हैं। हिलव्यू राजौरी इस बार स्टंप आउट करार दिए गए और इस प्रकार से एक और विकेट का पतन होता हुआ 9वां गवाया है यहां पर। और नासिर बशीर को एक और सफलता मिलती हुई, ये दूसरी विकेट उनको मिली है। और पवन निर्वाणी को ये फ्लाइट देने का प्रयास था, जो कि स्टंप्स भी घेरे, क्रीज से काफी दूर रह गए थे और काफी उत्साहवर्धित थे नासिर बशीर। शतक और 2 विकेट आज गेंदबाजी का अवसर मिला। हिलव्यू राजौरी 146 पे 9, 14.5। अंतिम जोड़ी होगी बीच मैदान में रजत शर्मा के रूप में। अब नए बल्लेबाज अंकुश बंद्राल के साथ 45 पे बंद्राल, रजत नए बल्लेबाज। नासिर कुमार 3.5 में 40, 2 विकेट। और अब जाकर के आखिरी प्रयास होगा इन 2 बल्लेबाजों का। निर्वाणी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। दूसरा क्वार्टर फाइनल। वाहिद अली ने स्टंप किया नासिर बशीर कुमार की गेंद पर। 31 गेंदें, 119 रनों की आवश्यकता। और कुमार आखिरी गेंद लेकर के 146 पे 9, 14.5 के बाद। रजत शर्मा सामने, बाएं हाथ के बल्लेबाज अंकुश बंद्राल भी बाएं हाथ के, तो 2 लेफ्ट हैंडर इस समय बीच मैदान में। आखिरी जोड़ी और आखिरी प्रयास। नासिर कुमार एक बार फिर फ्लाइट देने का प्रयास, गेंद के पिच तक पहुंचे, खूबसूरती के साथ वापस सीधे बल्ले से खेला बॉलर की दिशा में। अंतिम गेंद पर रन नहीं, ओवर समाप्त, 15 समाप्त। 15 के बाद 146 पे 9 हिलव्यू राजौरी। 30 गेंदें, 119 चाहिए। 5 overs remaining. The asking rate is now 23.80 an over, shade below 24 runs per over. Not going to be easy, and it's beyond imagination. They're well behind, 119 away. Not easy. Impossible is in front of Hillview now. Rajat yet to open his account. Ankush scored 45 and Pavan Nirvani scored invaluable 30 plus of 16 balls. That was a cameo, but that was full of confidence and class. Ajishwan, it flies, but will drop short of a man at backward a point. It does. It kicked off the surface. That did surprise Ankush Bandral for a while. He misread it completely. That was the beauty of a ball from Row Bashir. They need 119 from 29. It's another dot ball. It was a drivable line in length. Invited him to drive the ball. He's got the short cover, the catching cover in place. There is
Jahangir Lon has got the man up inside 30 at mid-off. He's got mid-off up and catching cover. Long on is patrolling around the boundary line. 2 dots from Roof. Now he works it onto the onside. Not gonna look for one here. He's not gonna push for a single. There is a big misfield from OS. But he decided against a single there. To me, it was a couple on, pretty on. Decided against that couple. Roop goes full. Good delivery. Shies it in. But nothing is going to go Roop Bashid's way there. He's trying to catch better shot off his ground. Swell with a straight bat. Bat is coming right behind the ball. He's giving respect to the good ones. He's been the only man who fought hard and is still in the middle. This time that's aerial, and that's going to be the 50 for Ankush Bandral in some style. Moves to 51 of 27. Humongous blow, and it landed beyond the side screen. What a hit. Nice pick of 4 sixes and 4 boundaries. It took 27 balls to get there with a strike rate of 188. Look that. Gets it in that zone in his radar. And he clears it with ease. Through the line it flies. And it goes the distance. Much needed blow. 113 behind from 25 balls. Again, trying to go with that Yorker length. This time is dispatched into the extra cover boundary for 4. Opened the bat face, presented the bat face to find that fence with ease. Look at that shot again. Brilliant. Inside the line. And brought his bat down in time. Gives it a direction. And the ball runs away. Goes past to the fielder. It wasn't easy to chase down. So with that boundary, they're 109 behind from 24 balls. Ankush moves to 55-28. Jahangir Lon is smiling. Is he gonna ball here? Yes, he's got the ball in his hand. They're gonna try all the options in today's game. Jahangir Lon has got the ball. Nasir Bashir Kumar, part-timer, chipped in with couple of overs and picked up 2 wickets. Now took 4. Yash could only pick 1 in today's game. He's gonna bat without helmet. Ankush. It looks like that spinner's going to be here and there. Jahangir Lon will operate. This time hits the gap. He's gonna pick 1. It goes in front of square on the on. Not what he intended, but he's gonna pick that single. They need 108 now from 23 balls. Current rate is 9.71. The required rate is gone up to 28.17 and over. Ankush standing tall. Unbeaten. In the middle. With short fine leg up. This time unable to keep that one away for a single. It's a good one from Jahangir Lon. Will he be able to pick that final wicket to wrap it up? This time goes big. Goes the distance into the stands. And there is a big space available. Nobody is there. Vacant stands. And it landed there for a maximum. What a pickup shot again. The lone man. The only warrior. The fighter in the middle. Was fighting it out for Hillview. Gone again. This time bit deep. And over mid-wicket for the 6th number 2 of the over. Now they need in double figures. 96 behind. Wow. Humongous. Country mile hit. Knelt down on one knee.
2 sixes. A para maximum. 2 hits. 169 for 9. 96 needed. This time, third one. Hat trick of sixes. Oh, look at that. It's a bit late, but Ankush Bandral is playing that inning of high level with supreme confidence. The touch has got, the pace he is generating, the resilience he's got. He's going to resist and persist. 3 wonderful hits. Wonderful cricket is going on. There is a short pause in play because of the windy atmosphere out there, and you can see our cameraman over there on that straight boundary. You can see that the canopy gone flying. Look, where is it? Where it is going? And may I remind you once again, that's why I was talking about that. You couldn't see that on your screen, but what we're seeing, it's gone cloudy, it's windy here. It is in a gentle breeze, it's windy, it's gust, gale, storm here. And our camera persons who are stationed well on their respective places, even they lost their canopies for a while. So little disturbance in the middle. We saw 3 sixes coming, but the wind speed is boisterous and its ferocity is visible. And we had the light finally back here in the com box. Disturbing scenes because of windy atmosphere outwards.
Asim Manzoor has got the ball, and dear beloved listeners, if you are feeling any kind of inconvenience, it isn't our fault because it's windy out here, and camera persons, they are down on the field there. They are taking care of themselves because safety matters the most. We can't continue with such gusty winds here at the Santa. It's windy. You can see that that match is going in air now. So, dear beloved listeners and viewers, you know that you can't see what we are going through right now. We are only you are only getting our audio with that desired amount, inshallah. But you are not seeing what we are seeing here at the center. The pictures right in front, which are unfolding here at the center, and we are seeing that it's gone cloudy, it's gone windy. Heavy winds around the play field and ground here at Bakshi Stadium, Srinagar. Heavy winds. Another short pause in play. Umpires can't continue because it's heavy wind in the middle. So, dear listeners and beloved viewers, stay tuned, stay connected. We will update you with the final result of this game. We shall update you, but at the moment, we don't have the camera persons in their respective positions. And that's why video isn't available at the moment. You can see that there is the only graphic in front of you. That is the fixture of today's game, which is being displayed. We can see that the intensity is pretty high at the moment. It's a tremendous wind out here at Bakshi Stadium. It's gone from bad to worse now. Heavy winds. Camera persons, they are holding on to their cameras at the moment. Ankush Bandral is still there, just 1 wicket away. Team Royal Goodwill to make their way into the semi-finals of the tournament. They are the defending champions, and with this win, they are going to be in the semi-final, second time round in Red Premier League. Now the mats are being removed. They were creating a kind of fuss in between. I think this is a good move to remove both the mats over there. It may be running in next half an hour here as it's just gearing up. Bad weather here. Back again as we watch Asim Manzoor again. And left alone, white signal by umpire Ravi Kumar Chaurasia. Asif can't keep it within the marker. We're telling you what's going on at the moment, so stay tuned. Bear with us. The next one, left alone again. This time it's within the marker. It's within the trim line. No problem there. And Asif is bowling a little quicker at the moment. As we watch once again, Asif. 183 for 9. That's aerial. That's a good shot. Nag is there to cut it off. Nag does well. They're 184 for 9. We're into the 18th over of the game. With 9 wickets down, 1 wicket away. 81 behind. And with that 4, they are 77 runs behind, 188 on the board. In the meantime, Rajat is getting ready to face the next one. A 4 coming, handy boundary. Now trying to guide it. Shaping for that guide shot, trying to run it down to the third man. Can't make sure, unable to put that one away. This is quarterfinal number 2 underway here at Bakshi Stadium. That's a big shot. That's aerial. Nag is going there. Will he make it to the ball? No way. Ball wins the race. That's 4. And it's into the 190s now. 192 to end the over number 18 with 9 wickets down. And you got to give due credit to the batter, Ankush Bandral. Had he been promoted up the order,
things would have been different, but it's too late to say, I think, Nazir. Ifs and buts don't matter. What matters the most is how you apply on a given day, how you play the cricket. And the brand of cricket they play. The brand of cricket they played today, and they were not up to the mark, talking of the batting unit, Hillview Rajouri. Yeah, they're 192 now. But it's too late. 2 overs. And they are 63 runs behind, I think. Is it? "73 runs behind," and our score ticker and the scoreboard there, the big signage isn't working, which is within the play field over there. "12 balls, 73 needed. 36, shade over 36 and over. First ball is going down to the point boundary for fours. Fours won't do it. Sixes will do it with ease. They need 12 sixes on the trot to level the score here. First ball 4. पहली गेंद से आया चौका. Please come in, Sheikh Nazir. 196 69 अभी भी बनाने हैं मैच जीतने के लिए. और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार. एक और अच्छा स्ट्रोक, फिर गैप में, और गेंद फिर बॉर्डर लाइन से बाहर. ये 200 रन पूरे होते हुए, और अब 65 चाहिए मैच जीतने के लिए. और ये 19वां ओवर, 2 गेंदें फेंकी जा चुकी, 4 का आना बाकी, 10 गेंदें, और मैच जीतने के लिए 65 रनों की आवश्यकता. 200 पे 9 बंदराल, 89 पे 29 गेंदों से रजत शर्मा, 9 पे 5 गेंदों से 9 गेंदों से 65 चाहिए. वैभव माली अपना पहला ओवर फेंक रहे हैं, 8 रन खर्चे हैं. इस बार गैप में, ओ यहां पर कैच छूटा, किनारा लगा था, नाग से कैच छूटा. और अब 8 गेंदों से 65 चाहिए मैच जीतने के लिए. निश्चित तौर पे कहना चाहिए कि अब ये आखिरी औपचारिकताएं बची हैं, क्योंकि 2 गेंदें इस ओवर की, उसके बाद अंतिम ओवर 8 गेंदें, 65 की आवश्यकता. पर बंदराल 89 पे नाबाद है, 11 रन दूर है शतक से. क्या कर पाएंगे शतक पूरा, ये देखने वाली बात होगी. गेंद बॉर्डर लाइन की ओर जा रही है, पीछे फील्डर जा रहे हैं, पर जब तक बॉर्डर लाइन के बिल्कुल पास में उसको फील्ड किया जाता है, वहां पर रन लिया नहीं. 11 रन दूर है और 89 पे नाबाद है. 40 गेंदों से 41 गेंदों से 89 पे नाबाद. 7 गेंदें 65 पर अंकुश बंदराल 89 पे. यह शतक पूरा करना बस काली बात पर रहेगा उनका. और यहाँ 1 रन और मिल जाएगा बंदराल को. बंदराल पहुंच गए 90 पे, 42 गेंदों से 201 9 विकेट के नुकसान पे. 19 ओवर की गेंदबाजी, अंतिम ओवर, और 64 रन चाहिए. पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्यों, क्योंकि ये अब रन चेज जो है असंभव है, पर 10 रन जी यहाँ शतक पूरा करने के लिए अंकुश बंदराल को. ये 10 रन बनाने जरूरी है ताकि उनका शतक पूरा हो जाए. कोशिश जरूर होगी अंकुश बंदराल की. Well, he should try here, as they're not going to win the game, but he can achieve that milestone. He can achieve that something special. I think players are going off the field. What's going on? Royal Goodwill fielders, a majority of them are going off the field. What's going on? As heavy wind is, and why they're going and continue with this Sam Field setup. Oh, that's taken. It's gone on 90. Oh, it's pouring in at the moment. I think rain has started. Look at the ground stop. They are almost in readiness. They're coming out with the covers there. You can see that the big cover is there. We don't have the hover cover, but they have one special cover to cover the batting strip. And so that's it we have for you from this area. It's a 64 run victory, 63 run victory for a team Royal Goodwill. They are the second semi-finalist team of the tournament. With this message, we shall be back with game number 3 this evening. Till then, Assalamu alaikum fi amanillah.